So welcome back everyone, and we had a session in the morning on the myths and social movements, the effects of myths and on the movements, social structures. Basically, two presenters talked about social structures, and this session is about cultural texts which are generated by the members of. So the cultural generated by the members of the society, and sometimes the leaders use them in various types of movements. It's not only in India, not only in Indian independence movement, but across the world in any movement. When the Tompkins pamphlets were there, whether they intended to contribute to American or what they wrote specifically for revolution or being used, they always get used. And also, on the other hand, leaders themselves generate some cultural text. So in this session, we will see both, and there were some wonderful panels here. The chapter session, I request Dr. also and script writers. He has more than 16 books to his book of stories. Teresa's Man was nominated for Frank Warner International Award in the year 2015. He is also a winner of Bharatiya Gyanpith Award for his contribution to Konkani literature. Two more panelists are there here with right now. First is Dr. Archana Singh. I request Dr. Archana to come to the dais. She is Associate Professor G.B. Kanpur, Social Science Institute, Allahabad. After completion of her PhD in philosophy, she has done her postdoctoral project entitled Ecofeminism, a war against survival of the fittest. Her area of interest is caste studies, gender studies, and cultural studies. She is working on contemporary caste, gender issues among Dalits, tribes, minorities, especially the method that these women are using to resist subjection, hidden caste, class, gender dynamics. The next panelist is Dr. Om Prakash Dwivedi. I request Dwivedi to come here to the dais, and he is an associate professor of English literature and head School of Liberal Arts, University of Noida. His latest publications in representations of precarity in South Asian literature in English, a special issue of the Journal of Commonwealth Literature on the theme Partition, 75 years on. Forthcoming is a special issue of Asia-specific pop culture titled Configurations of Sovereignty, Human Rights and Resilience as Popular Culture. The third panelist, Vishwas Patil, he must be on the way. As and when he arrives, let him join the panelists. So now I request Dr. Mozo to take over the session. A very warm welcome to all of you to this second session of this day. Of course, the audience is very thin, but doesn't matter. We'll proceed with this, and I hope my panelist, writer friend Vishwas Patil, will shortly join us. Friends, in fact, the topic given to us is the leaders, literary text, and the freedom movement. So I hope we will be able to do enough justice to the topic. Since yesterday, at this last year's Sangoshti, we have been discussing various aspects of our independence movement and nation
past. I'm impressed by the rich contribution of our leaders to Indian literature. Our nationalist fiction writer, Raja Rao, I would rather prefer to talk about his text because he relates to the topic that is given to us. So Raja Rao calls the written word as a mantra. Of course, to all of us, it is a mantra. We believe in it, and that is why we belong to this tribe called writers. For him, the word is sacred, and writing is worship. He would say, and I quote, unless the word becomes mantra, no writer is a writer and no reader is a reader. And I unquote. He was very clear about the idea of India, and he has written about it extensively. Let me further quote. I've just taken some excerpts from his quotes. He says, if there were no India with the seven seas to the south, if there were no India with the seven seas to the south and the white swan Himalaya to the north, if India did not have the holy Ganga and the cape of the virgin goddess Kanyakumari, if India was not the land of the elephants and the monkey world of parakeets and peacocks or the saintly cobra, if India did not have the diamonds of Golconda and the pearls of Coromandel, if India were not the land of sadhus, if India were not the country of Ashoka or Bhojaraja, of Vikramaditya or Akbar Badshaha, India would still be. India would still be. India is not a country, a desha. It is a perspective. I unquote. With this very important quote, I felt that we are going to discuss, our panelists are going to discuss the topic, particularly in respect of the nation building. If we trace the concept of India as visualized by our leaders, we get a fair idea of it. And to me, the idea of India is conditioned by her ethos. India that stands to celebrate its diversity. India that defends human values. India that upholds equality and justice. The India that cherishes fraternity beyond its borders. My India treasures the notion of Vasudhaiva Kutumbakam. All this is underlined by our constitution. What a cultural phenomenon our constitution is. Our writers like Professor U.R. Anantamurthy, Umashankar Joshi, Girish Karnad, Durga Bhagwat, Virendra Kumar Bhattacharya, Rabindranath Tagore, or my mentor, Rabindra Kayekar, have been our lighthouses who left no stone unturned in pursuing their goal of one India. Whether languages, cultures, or people, the very purpose of existence or rather coexistence is embedded in that notion, one India. We do have a plethora of languages and we write in different scripts. We have a multiplicity of religions and a number of schools of thought. Varied traditions, assorted dress codes, different modes of expression. They are part of our culture. They are connected by an integral humanism. Though traditionally people maintain the class and caste divisions, they also share a sense of understanding. The renowned economist Amartya Sen has rightly said, I always quote this, I like this quote very much, and I quote, Indian identity is a combination of internal pluralism and external receptivity, I unquote. Nothing could be more accurate. I experienced this situation in Goa, where I live in and day out, I see that the Hindus and the Christians, the Catholics of Goa, both have distinctive ways
of living, of eating, of praying. At the household level, they may not intermingle, but on the social plane, you will see an excellent harmony. This is my ideal India, which I experience day in and day out in my state, Goa. So with the opening remarks, I believe I have created enough platform for my panelists to carry on. So we're going to take up first. Yes, so Dr. Archana Singh will speak the next. So, धन्यवाद सर। मैं आज बात करने जा रही हूँ कि जो हमारी महाकाव्य की स्मृतियां हैं वो कैसे लोक का निर्माण करती हैं और उस लोक में कैसे जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनको सृजित और पुनर्सृजित करती हैं, पुनर्परिभाषित करती हैं और इन स्मृतियों द्वारा रचे हुए लोक को राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे हमारे नेताओं ने यूज किया और कैसे उससे स्त्री सहभागिता को सुनिश्चित किया। तो ये पूरी ट्रेजेक्ट्री है जिसमें लोक में पूरी फेमिनिटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उस कंस्ट्रक्शन को हमारे लीडर्स विमेन पार्टिसिपेशन के लिए यूज कर रहे हैं और उसके बाद वो जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार उसकी निर्मित और पुनर्निर्मित कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो लोक स्मृतियां हैं वो अपने ढंग से का कंस्ट्रक्शन जो हम फैमिली कहते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। आप समझिए कि पूरा जो हमारे का कंस्ट्रक्शन होता है, कल विश्वास वाली बात कह रहे थे कि हमारे लिए करनी या अकरणीय सब कुछ हमारी महाकाव्य स्मृतियां तय करती हैं। तो ये जो सारा कंस्ट्रक्शन ढंग से परिभाषित किया जाता है, जैसे लोक गीतों में एक बहुत ही पॉपुलर सिचुएशन होती है अधिकतर हमारे उत्तर भारत के, स्पेशली उत्तर प्रदेश के लोक गीतों में, जहाँ पे कि सीता अपने विवाह के समय जनक से संवाद करती हैं अपने पिता से और वो उनको समझाते हैं कि कैसे उन्हें रहना है, कैसे मूल्य, क्या मूल्य हैं, किन मूल्यों के साथ वो परिवार में जाएगी। और इस पे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मैं सॉन्ग्स पे नहीं जाऊंगी, विल टेक लॉन्ग टाइम, बट उसमें सारा ये संवाद जो है वो एक विशेष तरह की मूल्यों का सृजन करता है कि तुम्हें ऐसी स्त्री बन के रहना है जो हमेशा तुम्हें मतलब परिवार के का ध्यान देना है, सबके लिए त्याग की मूर्ति बने रहना है, अपने संतान की देखभाल कैसे करनी है, ये सारा कुछ उसमें होता है। लेकिन इसमें स्त्री साइलेंट नहीं होती, सीता भी लगातार अपने पिता से ये मांगती हैं कि मेरा पति कैसा होना चाहिए। राम के रूप में वो एक आदर्श नहीं, उस तरह की मैस्कुलिनिटी नहीं जो बड़ी असर्टिव हो, एक बहुत ही कोऑपरेटिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप की बात करती हैं सीता और वो अपने पिता से कहती हैं कि मुझे ऐसा वर चाहिए। एक और सिचुएशन है जिसमें कि कई बार ये बात होती है, जन्म के समय एक सॉन्ग आ जाता है, अधिकतर पुत्र के जन्म के समय सोहर हमारे यहाँ कहते हैं उसे, उसमें भी ये बात बार बार की जाती है कि माँ बताती है कि हम कैसे अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, कैसे लालन पालन करेंगे। तो एक तरह से एक आदर्श समाज की कल्पना विवाह से लेके पुत्र के जन्म तक लोक में की जाती है और उसको फिर वो अपने ढंग से, इसमें जो बेस्ट पार्ट लोक का होता है कि लोक बहुत आपको स्पेसेस देता है जहां पे आप इंटरपोलेशंस कर सकते हैं। लोग आपको एक तरह की बात बहुत डोमिनेटिंग, लोग बार बार स्त्री को भी ये स्पेस देता है, वो कई बार अपने असर्शंस करती है, कई बार अपनी तरह से अपनी डिमांड्स करती है। तो ये अब प्रश्न ये है कि ये जो लोक गीत थे ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे आए। तो अगर मैं अपनी बात इससे शुरू करूं कि गांधी जी ने ये शुरू से महसूस किया था, मैं
बड़े नायक का नाम इसलिए ले रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से यूज किया, पर मैं केवल गांधी तक सीमित रहूंगी, क्योंकि उनको ये पता था कि इसमें स्त्रियों को संगठित करने के लिए महाकाव्य मूल्यों का सहारा लेना बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने भी अपने ढंग से उन मूल्यों का सृजन किया और उन्होंने स्त्रियों को पब्लिक स्पेस में आने की बड़ी मतलब एक छूट दी और उनका आह्वान किया कि वो, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात इसमें उन्होंने, अभी मैं फेमिनिस्ट डिबेट में नहीं जा रही हूँ, अगर अच्छी बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट के डिबेट में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ। गांधी जी ने उस समय की जरूरत के अनुसार जो स्त्रियों को पब्लिक स्पेस में आने की वो की, उसमें कहीं भी डोमेस्टिक स्फीयर और पॉलिटिकल लाइफ में कोई वर्सेस नहीं खड़ा हुआ। वो बहुत क्लियर था कि आप अपने डोमेस्टिक लाइफ में रहते हुए कैसे पब्लिक पॉलिटिकल लाइफ में आप कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। स्त्रियों की बात अगर करें तो उसमें कुछ चीजें उन्होंने की, जैसे कि खादी की बात की कि खादी आप बुने, खादी पहने, और आप समझिए कि पूरे लोक में बहुत सारे ऐसे गाने और कविताएं बने जिसमें स्त्रियों ने अपने पति से जो पहले गहने और कपड़े मांगती थी, उन्होंने कहना शुरू किया कि हम रेशम की साड़ी नहीं पहनेंगे, हमको एक खादी की साड़ी ला दो और हम वही लेके चले जाएंगे। तो एक बड़ा चेंज उस तरह से। गांधी जी ने दूसरा, स्त्रियों को व्रत और उपवास रखने को कहा कि जिससे कि एक अच्छे समाज की, एक सहगामिनी की और एक दृढ़ माता, यहाँ पे भी एक दो रूपों में देखा कि एक तो सहगामिनी जो पति के सब संघर्ष में साथ दे, और दूसरी एक बहुत ही दृढ़ माता जो अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दे कि वो देश के लिए लड़ सके, लोगों का पालन करने वाली, मित्रों और पड़ोसियों के लिए ताकत बनने वाली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्त्रियां जहां पे पुरुष थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रहे थे सूचनाओं का आदान प्रदान, गुप्त कार्यों में सहयोग, ऐसे कार्यों में देखा जिसमें वो विजिबल भी ना हो और राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह से मदद कर सके। तो ये गांधी जी ने जो आह्वान किया, इस आह्वान का असर ये हुआ कि पूरा जो अर्धशिक्षित और अशिक्षित महिलाओं का पूरा वर्ग था, उसमें अलग अलग ढंग से फिर लोक विधाओं द्वारा उन्होंने उन्हीं गानों की पुनर्रचना करनी शुरू की। वो जो सीता और जनक का संवाद विवाह के समय होता था, जिसमें वो कहते थे, इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं, एक सुरुचि थापर का है और इसके अलावा बहुत सारे जो लोक संकलन हुए उनमें भी ये गाने हैं, जिसमें सीता विवाह के समय अब पिता से एक दूसरे तरह के वर की कामना करती है, जो कि उसके रक्षा ही न करे बल्कि राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़े। बहुत सारे गाने ऐसे बनते हैं जिसमें स्त्रियां अपने पुत्र को कहती हैं, पति को कहती हैं कि पुत्र का जन्म हुआ है, आप जेल में हैं, चिंता मत कीजिए, हम उसका खादी उनके इतना कमा लेंगे कि उसको हम पढ़ा के देश के लायक बना सकें। तो ये पूरा जो मैसेज था गांधी का, वो इतने अच्छे से डिसैमिनेट हो रहा था समाज में इन लोक विधाओं द्वारा, और ये बहुत समाज के हर निचले स्तर तक पहुंच रहा था, क्योंकि ये लोक भाषा में था और लोक स्मृतियों का इसमें उपयोग हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग ढंग से अलग अलग कैरेक्टर्स को ले रहे थे। गांधी जी खुद बहुत सारे रामचरितमानस के उसको यूज करते थे, बाबा रामचंद्र कहानियां सुनाया, कथाएं सुनाया करते थे। इसमें जो इसी समय जो साहित्य लिखा जा रहा था, मैं पॉपुलर साहित्य की कुछ ऐसी पत्रिकाएं जो स्त्रियां बहुत पढ़ती थी, क्योंकि उस समय स्त्रियां औपचारिक शिक्षा में नहीं उस तरह से थी, तो जैसे चांद हुआ और चांद और स्त्री, उसका नाम हाँ, चांद, गृहलक्ष्मी, स्त्री दर्पण, ये सारी मैगजीन्स जो हैं ये अलग अलग तरह से फोर्स पे अपनी बातें कर रही थी। और बात का मूल तत्व क्या था, वो बार बार उस डिबेट को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही थी, जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, जो वेस्टर्न फेमिनिज्म खड़ा करता है, उसको बार बार डाइल्यूट कर रही थी। बहुत सारे ऐसे लेख हैं जिनमें वो कहती हैं कि नहीं, मुक्ति
का अर्थ ये नहीं है, मुक्ति का अर्थ आप परिवार में रह के देश को अगर सहयोग करते हैं तो ये भी अपने आप में एक बड़ी मुक्ति होगी, क्योंकि परिवार एक इकाई है और वो अगर देश निर्माण में सहयोग करती है तो मुक्ति का ये एक बड़ा रास्ता हो सकता है। तो इस तरह की जो पूरी राइटिंग्स थी, जो स्त्री मानस को उस समय प्रभावित कर रही थी और समाज को भी प्रभावित कर रही थी, वो अपने अपने ढंग से इस तरह के मुक्तिकामी मैसेज को, जिसमें मुक्ति बिल्कुल कहीं भी कोई वर्सेस नहीं क्रिएट कर रही थी, उसकी बात कर रही थी। और शायद ये लोक की ही शक्ति है कि जिसमें इस तरह का वर्सेस नहीं क्रिएट हो पाता है। लोक बहुत सबको सम्मिलित अपने में समाहित करने की शक्ति रखता है। अब अगर हम इसको ऐसे देखें कि जो स्त्रियां घर में रहती थी, चांद में इसमें कई आर्टिकल पे इस पे बात की गई है, वो अचानक सड़क पे आ जाती हैं। इससे पहले एक जो डिबेट बाइनरी थी वो भद्र महिला, जो घर की औरतें और सड़क की औरतों की थी। अभी क्या हुआ, ये जो औरतें सड़क पर आ गई, वो सड़क की औरतें नहीं हैं, वो घर की ही औरतें हैं, लेकिन वो देश की जरूरत के कारण सड़क पे आ गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी, कहते हैं ना, एक रास्ता था जिसमें स्त्री पब्लिक स्फीयर में आ रही थी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रही थी, लेकिन वो सड़क की औरतें, वो जो स्टिग्मा था वो उस फ्रेम में नहीं जा रही थी। तो समाज की बहुत सारे, उस समय ऐसा नहीं, बहुत सारे इस तरह की भी राइटिंग्स हो रही थी जिसमें प्रश्न हो रहा था कि क्या गांधी के भी बारे में, मधु केशवर, सुजाता पटेल, इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि गांधी बहुत डोमेस्टिसाइज करके देखते थे, लेकिन शायद वो समय की जरूरत थी और लोग उस समय की नब्ज को समझ रहा था, इसलिए वो कहीं पे भी विद्रोह या विभेद की स्थिति नहीं ला रहा था। वो बहुत ही, अगर आप कहिए कि कल्चरल थ्रेड द्वारा वो सबको जोड़ रहा था, वो कल्चरल थ्रेड सबको शक्ति दे रहा था। तो मैं इसमें ये जो पूरी ये ट्रेजेक्टरी की मैंने बात की कि महाकाव्य जो मिथक हैं, स्मृतियां हैं, ये कैसे लोक में आई, उसको कैसे हमारे नायकों ने यूज किया और कैसे हमारी स्त्रियों ने उसे अपने ढंग से गढ़ा और वहां से वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आई। तो इसमें थोड़ी सी समस्या जहां होती है उसकी बात करके मैं अपनी बात बंद करूंगी, क्योंकि हमारा जो अपनी शिक्षा दीक्षा और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं हमको एक वर्सेस में देखने की आदत होती है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, और पूरा वो फेमिनिस्ट, जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है, वो हमें डोमिनेट करता है। इसलिए हम इसकी शक्ति नहीं देख पाते। हम बार बार जब बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि नहीं, गांधी ने डोमेस्टिसाइज करने की कोशिश की, तुलसी ने महिलाओं को बहुत मतलब नेगेटिव चित्रण किया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहीं पे मंदोदरी भी थी जो अपने पति के नैतिक आचरण पे प्रश्न करती। हाँ, उतनी हाईलाइट नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे वो हैं। और आप ये जानिए कि लोक गीतों में ये सारे मतलब आख्यान बहुत अच्छे से आते हैं। सीता कैसे अपने पति के साथ वनवास पे जाती हैं, कैसे वो उनके साथ संघर्ष करती हैं, और लड़कियां अपने पिता से कहती हैं कि आप डरिएगा मत, हम वहां पे जो भी स्थिति होगी हम उस पे पति का साथ देंगे। तो ये बड़ा समरस सा एक जो कहते हैं, जिसमें इसकी शक्ति ये थी कि स्त्री की आइडेंटिटी कहीं भी डाइल्यूट नहीं हो रही है, किसी तरह का सबऑर्डिनेशन नहीं है, ये अपनी चॉइस है जिसमें कि वो अपनी तरह की दुनिया रच रही है, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके लिए खुद चुन रही है कि उसे कैसा कंट्रीब्यूशन करना है, वो उसका चुना हुआ रास्ता है जिसमें वो जा रही है। और वो जो रास्ता चुन रही है वो परिलक्षित कहाँ हो रहा है, दो जगहों पे। एक उसके लोकगीतों में, जिसे वो बार बार अपने ढंग से चेंज कर, इंटरपोलेशंस कर रही है, और दूसरा उन राइटिंग्स में जो चांद, स्त्री दर्पण, गृह लक्ष्मी जैसी, जो पूरी स्त्री शिक्षा के लिए उस समय औपचारिक शिक्षा के लिए जरूरत का काम कर रही थी, वहां पे ये स्त्रियां बार बार अपनी बहनों को ये सिखा रही हैं कि हमें अपना रास्ता ऐसे ही बनाना है और इसी से हम कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएंगे।
तो मुझे लगता है मैं अपनी और अगर प्रश्न होंगे तो फिर मैं आगे इसको बताऊंगी। थैंक यू। Thank you, Archana ji. It was not a feminist take on this topic, but of a take. So, I appreciate how the poet and my minister, Vishwas Patil, to present his paper. Vishwas Patil is a very well-known Marathi novelist whose novels are also translated including Hindi. Vishwas ji. And my friends, I feel India's freedom struggle itself was a great saga written by time and the Almighty. Whenever I think about it, I dream of a galaxy of leaders across the vast sky. I see the dazzling figures of Nehru, Dr. Ambedkar, Rajaji, Savarkar, Sarojini Naidu, and many others. Gandhiji was the biggest star in the sky, but others were also not small. They were outstanding scholars and great fighters who contributed or engaged their whole life for freedom. This subject itself is like a great epic, and the time that have given to me here is insufficient, but I will try to put some words before you. Fortunately, I have studied, thought, and investigated many episodes of this great battle for freedom, especially about Subhash Chandra Bose, and I have penned my novel, which is considered as an epical novel, Mahanayak, on this great era. I feel the subject of Netaji is incomplete without the portrait of Gandhiji and Nehru and the backdrop of this stormy time. In this context, I have traveled across this country, and for the states of Netaji, I visited Singapore, England, France, and I did a research in Japan and Germany as well. Hence, today, I will speak about my own experience in mainly understanding the great triangle of personalities between Gandhi, Nehru, and Subhash, which was really a great task before me. Luckily, great writers like Neeraj Chaudhary was living in Barrister Sharat Chandra Bose's house in the capacity of his secretary. Barrister Sharat Bose was the elder brother of Netaji and a member of Central Congress Working Committee. Nirad Babu has extensively narrated those days in his famous book, Daath and Great Anarch. And I have also interviewed many companions of Bose in Congress and Azad Hind Fauj 30 years back. There is a great task before a writer, always to find a needle from haystack. In early days of Madras and Karachi Congress, Subhash and Nehru were great friends and jointly a huge force which was unbearable for Gandhiji's wing in Congress. Hindustan ke do lal, Subhash aur Jawaharlal was slogan there. For projecting this tussle, I was searching for a ploy. Luckily, I got information from Gandhiji's work that during his childhood, he was fond of circus. I used this information and I put this way, Gandhiji remembered an incident from his childhood. He watched a circus with his father where there was a mighty ringmaster. He was so powerful that all animals in the circus were always trembling with the simple sound of his hunter. Later, the owner of the circus purchased two cubs. But whenever the two cubs were together, with their roaring, they used to make life unbearable for the ringmaster and for the all. With their shrill sound, the cubs were talking at the ringmaster and making fun of him in the presence of small animals. Hence, the situation was unbearable, uncontrollable for the ringmaster.
She felt that I can't control this circus by having these two cubs together. Later, when the circus car was passing, the master stopped and he unlocked the door of the cage and allowed one cub to leave and ahead with the other. The circus was peaceful again. Gandhiji smartly took inspiration from this incident, especially Congress 1938 had turned into really a Kurukshetra, where stood election of president against Gandhi and his candidate, Dr. Pattabhi Siramayya. In that stormy election, Subhash got elected by great margin of votes, and he also bagged much more votes in eight provinces, Panditji and Acharya Kriplani. That is today's Uttar Pradesh. On this extremely tense background, the session of Tripuri Congress began. Unfortunately, during those days, Subhash was suffering with terrible illness and was brought to Tripuri actually on a stretcher. And furious Gandhiji at the same time went on the strike at Rajkot. The disciples of Bapu were arch rivals and were not allowing Subhash to handle the work. And Subhash was used that opportunity for launching a great non-cooperation against the British Empire, that too in 1938. Everyone knows that further time, and Gandhi also convinced of the same way this great novel Mahanayak, and I have presented the character and controversy in such a way that some paragraphs. Dr. Kedar examined Subhash and his diagnosis was demanding. Sardar Patel and Jawaharlal looked worried. Still willing to leave it. An air of dissension spread over the elders' camp, but some members continued their banter. Hearing some mischievous laughter, Sharmaji, an elderly leader from Jabalpur, exclaimed, Sardar, what is this you are doing? Have senior members like you to become utterly insensitive? Mind your tongue, Sharmaji, thundered. Shut up, you lungiwala. Sharmaji stopped at him. Jawahar, Sardar, why are you letting these two, Acharya Kriplani and Rajaji, influence you into inaction? What Subhash has been reduced to. Both his condition for yourselves. Suppose Subhash meets with an untimely end, his body is taken away from Tripuri. What answer will you give when your biographers ask you question? At least give yourself the satisfaction of having seen him once before his death. At this, the working committee was truly shaken. Nehru took Dr. Gildar aside and asked, Doctor, what is this actually? His condition is alarming, critical. Nehru turned pale. He quickly slipped into his mausolees and rushed out. Sardar Patel followed him. When Nehru and Patel walked in, Subhash's bones were jutting out of his thin body. His face looked haggard and his sunken eyes were bloodshot. Nehru felt a knot in his throat. Subhash, why are you being foolishly stubborn? He asked gently. Jawahar, I can hear rumbling of the impending war. This is the moment when the Congress as well as the entire nation must gird itself for vigorous protest against subjugation. But your health, don't worry about that. I must send out my signal to the country for revolt. Subhash, it has become imperative for you to be admitted to the Jabalpur hospital. No, I refuse to step out Tripuri, but you will have to go to hospital. Dump me into the Narmada waters if you like. But I will not rest until I have made my address to the people of this country, Subhash declared. After a brief discussion, Jawahar and Patel prepared to leave. Just then, Prabhavati, Subhash's mother, running a comforting hand over Subhash's tired face, said,
is Gandhiji coming here from Rajkot, Jawahar? No, we have no information on that yet. Her eyes beamed. Jawaharlal became Subhash Chandra was carried on to the dais in the meeting hall on a stretcher, where a bed had been made for him. A few soft pillows were placed under his head so that even from the prone position he could see the delegates seated below. A blanket was spread over him. His face was dark from fever and rough stubble covered his cheeks, but his eyes glinted with determination, and he looked through the papers pertaining to the resolution. The sight was enough to stop one's heart. It was no Bhishmacharya on bed of arrows, but a 20th century Arjun fighting another epic war with the British Kauravas, trapped in a maze of misfortune. In his heart was unbounded confidence, but like hapless Kern, at the critical moment he found his chariot rutted, jammed deep in the battlefield. He who desired to free country from the chains of slavery had become helpless with illness. The second day, afternoon, Panditji's car was driving past Gandhi Kutir in its way to the venue of meeting. A never-ending line of people waited outside this sacred spot, to offer his homage with flowers and garlands. Panditji saw Subhash's mother Prabhavati coming out of the kutir. Jawahar stopped. Ma, how is Subhash? The fever is still there. Jawaharlal stood still, staring at the expanse of the Narmada. Mother interrupted. Till today, I have hoped you, Jawahar, and Subhash will always shine together like the sun and moon. Ma, don't you know how quarrelsome Subhash is? Jawahar, can you tell me one single instance when he has picked a fight for a selfish or personal cause? I suppose that is true. Nehru agreed reluctantly. Jawahar, Gandhiji is such a mountain of man. I was sure he would come here, especially now that Rajkot fast has ended. But I cannot understand why he too has hardened his heart like this. Had he been present, the curtain would be drawn over the controversy. Ma, I will put a call through to Rajkot. Will you speak to him? No. He might think I have become Gandhari, blinded my son's love. Besides Jawahar, at the worst, what will happen? My child will rise from the lap of his biological mother and enter the arms of greater mother, Bharat Mata. That's all. Jawaharlal got into car with her and set off towards the camp. She seemed to have withered. He said to her, Ma, Subhash and Bapu are two extremes. I get exhausted trying to make them reconcile their differences. Subhash is like a brother to me, but Bapu is my father. As they entered the gate, Dr. Gildar had examined Subhash. Checking his pulse, doctor said, don't take any more chances. Shift him to the Jabalpur hospital at once. Doctor, what exactly is the illness? Pneumonia. His right lung is seriously affected. Don't believe. Did you hear that, Subhash? Why are you being so stubborn? Life is more precious than politics. Jawahar pleaded. Turning his head on the pillow, Subhash whispered, but more precious is the future of our country. Jawaharlal knew well that this crisis would not be resolved unless Gandhiji come. He had sent Gandhiji a couple of telegrams. Tripuri was not all far away from Rajkot, but there had been no communication. Jawahar rushed off to the post office set up in the Congress camp. He was getting impatient to speak to Gandhiji and sort out this problem once and for all. With Subhash's condition so serious, anything could happen. Seeing Jawaharlal in the postal authorities dropped whatever they were doing and put through the call to Rajkot. Mahadev by this on the line at the other end. Mahadev, Subhash's condition is causing concern. I need to seek Bapu's advice. Please give him the phone.
Mahadev Desai put the receiver on hold. Jawaharlal could hear Gandhiji's voice from other side. But Mahadev Desai interrupted. Gandhiji is not available. Jawahar sat there dumbstruck. The last incident. That day, Subhash Chandra was expelled from All India Congress in the Calcutta session by Mahatma Gandhi himself. In Subhash's own hometown, there was a sort of tension everywhere, but being a close companion for years, Jawahar was staying as usual in Subhash Bose's place. And on the very next day, he was to return to Allahabad, and Subhash was going to see him off at Howrah station. The car was waiting at the door. The luggage was stored away in the boot of the car. Subhash and Jawaharlal embraced each other. As Jawaharlal was getting in the car, young Geeta, the niece of Subhash, ran up with a long-stemmed red rose. She knew how fond Chacha was of flowers. Subhash broke the stem and was tucking it into Jawahar's coat. When Nehru exclaimed, "Wait, Subhash, blood!" Quickly he pulled out his handkerchief to dab the Subhash's finger. Subhash drew his hand back and smiled and said, "Never mind, Jawahar. God has built roses for you and thorns for me." I think Vishwas has turned this session into story reading session, a wonderful episode in the history that he's told us. In fact, it is more telling than any lecture on this topic. Yes, life is more important than politics. But the reply was, yes, but the future of India is more important than life and politics. So that is the message he gave. And thank you, Vishwas, wonderful. And now is the turn of whom will be reading. Yes, please. Take your time. We have plenty of time that way. Thank you. It's a lovely coincidence that you stopped with a reference to Allahabad. And I come from Allahabad, so I will continue your journey. Yeah, so thanks to Sahitya Academy for giving me this platform to share my thoughts to the esteemed audience who have turned up here, although the number is very thin. But anyway, it's good to have you around. It's also lovely to see my the guru of my spiritual journey, Professor Shri Prakash, sitting here. My pranam to you, sir. And it's a great privilege to read my paper in this panel being chaired by Honorable Dr. Damodar Mazorji and my fellow panelists, Mr. Vishwas Patilji and Dr. Archana. The paper that I'm going to read is, it deals with Dr. Rajendra Prasad's journey, his contribution to nation building, both as a political leader and social reformer. Of course, Prasad derived his anti-colonial strategies from Gandhian philosophies, the philosophy of Satyagraha and Swaraj. So much so that he was deeply attached to the three underlying principles of Swaraj: Ahimsa, Swadeshi, and Sarvodaya. So it won't be a wrong claim to make that if Gandhi was experimenting with his truths, here was Prasad in different part of India, that is in Bihar, who was experimenting with Gandhian philosophies and ideas, testing them and incorporating them in his own political journey to carve out his own identity and also to help Gandhi combat the mighty colonial forces. Gandhi casted a huge influence on Prasad.
And his values, I mean, Gandhi once said that your beliefs become your thoughts become your words become your actions become your habits, your habits become your values, and your values become your destiny. So that is what fascinated Prasad, and he joined Gandhi in his national building exercise. In fact, uh, like Gandhi, who was who was advised by Gopal Krishna Gokhale to give up his practice of law in South Africa and return to India, Prasad also gave up on his professorship of law at the University of Calcutta and joined Gandhi in his freedom struggle movement. And he also garnered huge respect from the opposition, something which is well nigh unimaginable in the present political setup. In fact, Atal Bihari Vajpayee goes on to say in his famous Rajendra Prasad Memorial Lecture that about Prasad, that Prasad was a sadhu in Rajniti. वो राजनीति में साधु थे और साधु में राजनीतिज्ञ थे. That is what he famously puts in his lecture. So Prasad was born in the Siwan district in Bihar, in the village Jiradi, which, like most of the other Indian villages, did not have any primary school, and hence he received his entire early education from a Maulvi of his village, who introduced him and also taught him Persian and Hindi languages. Subsequently, he was sent to a high school in Chhapra district, passing the entrance examination of the University of Calcutta. Thereafter, Prasad got admitted into the prestigious Presidency College in Calcutta. Despite his young age, he gained more popularity than his senior peers in the college. In fact, he became so popular that he went on to fight this student leader elections and won it by a huge margin. Even as a student, Prasad displayed patriotic instincts. The anti-partition instinct agitation that followed the partition of Bengal in 1905 and the slogans, his speeches by nationalists had inspired him a great deal. In 1906, while pursuing his education at the University of Calcutta, he attended for the first time a meeting of the Indian National Congress. In 1908, he organized the Bihar Students' Conference, something which brought him in the mainstream Indian politics, and went on to form the Bihar Students' Conference, the first organization of its kind in the whole of India. Sensitive by instinct and sentimental by temper, Prasad displayed a deep inclination to serve India by joining as an active and full-time member of the Servants of India Society, founded by the great social reformer Gopal Krishna Gokhale at Pune in Maharashtra. The aim of the society was to train and throw up in the selfless service of the soil the national missionaries, and thereby to promote by constitutional means the true interests of Indian people. Although fascinated by the motto and the aims of the Servants of Indian Society, his elder brother Mahendra Prasad ensured that Prasad distances himself from this society. Having thus been deprived of the opportunity to serve Gokhale, Prasad, however, was destined to meet Gandhi in Ahmedabad in 1915. Prasad's strategies for anti-colonial resistance was largely borrowed from Gandhi. He was deeply influenced by his idea of satyagraha, insistence on truth, and ahimsa. Prasad believed that the pathway for national struggle needs to go through Indian villages, unifying the masses, increasing their literacy rate, and making them aware of the idea of India. Prasad was greatly influenced and strongly shaped by rural life. He was of the opinion that villages were capable of meeting all the requirements of life and society and considered them self-contained units. The full story of the Satyagraha in Champaran is apt
perfectly written and documented by Prasad himself in his 225-page book bearing the same title. While serving as the Minister of Food and Agriculture in the interim government of the Prime Ministership under the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru in 1946, Prasad gave the slogan of Adhik Ann Upjao, grow more food. A firm believer in the maximization of agricultural production and amelioration of peasants, Prasad made sure to make use of this position to bring the village life to the center. Prasad began his active political career when he joined the Indian National Congress in 1911 as an ordinary worker. He served the organization in various capacities for more than 4 decades. For him, the Indian National Congress was an instrument for serving the people and fighting for the cause of India's freedom. From an ordinary worker, he rose to become the president of the organization, not once, but thrice. Rajendra Prasad came to know Gandhiji in 1917, during the Champaran Satyagraha. The poor villagers of Champaran were being exploited by the indigo planters. The exploitation has been going on for several years, and in spite of all efforts by the Champaran cultivators, including resort to law courts, relief eluded them. The foreign government was with the exploiters. Even the law courts failed to give justice to the poor peasants who were forced to grow indigo on 3 out of 20 parts of their best land and were paid very poorly. There were many other illegal exactions by the indigo planters and their officials. Rajendra Prasad, along with his friends, strived hard to record the statement of peasants, first in Motihari and then in Batiya. And within 3 weeks, they recorded no less than 4,000 statements, which was a huge achievement. And this provided Gandhi a base to prepare and send a report to the authorities, resulting in the setting up of a government inquiry with Gandhi as a member to represent the indigo cultivators. Gandhi then invited Prasad and some other advocates to assist him to fight for the cause of peasants. Prasad and his associates responded to this call and participated in his experiments with Satyagraha. The Champaran Satyagraha not only brought him closer to Gandhi, but also changed the entire course of his life. Inspired by Gandhi, Prasad began to live the life of a true Gandhian, washing his own clothes and utensils, traveling by third class in trains, and giving up on every ease and comfort. He continued to live a simple and humble life, even when he occupied the highest office of the head of the state. The weapon of Satyagraha, launched by Gandhi in Champaran, was perfected in Kaira. The peasants of Kaira District 2, following the technique of Satyagraha, refused to pay land revenue despite imperial government's enforcements of punitive measures. The government had no other alternative but to yield. If Champaran Satyagraha made Prasad believe in the Gandhian mode of Satyagraha, the splendid success at Kaira drew him closer to Gandhi and strengthened his belief that the weapon of Satyagraha was the only effective way of protest against exploitation by the foreign rulers. Thus, Prasad was the first leading figure from the eastern province to join Gandhi, just as Vallabhbhai Patel was from the western provinces. It was around this time that Prasad gave up the lucrative law practice he had so assiduously established to enable him to devote and dedicate himself wholly to the cause of the liberation of India. In 1924, as part of the non-cooperation movement, Gandhi launched a countrywide Satyagraha, which received an overwhelming response from the people. The Chauri Chaura incident, however, in which an angry mob had set a police station on fire, resulting in the death of several police personnel, forced Gandhi to withdraw the movement. Many leaders did not endorse Gandhi's move of calling off the movement and described it as the ignominious retreat. Prasad, however, was among those few of his associates who concurred with Gandhi's decisions and agreed with his assumption that the country was not yet ripe for this kind of a non-violent cooperation movement. That was perhaps one of the reasons that Gandhi saw in Prasad a great deal of himself.
and assigned him the constructive task of preparing people for the Satyagraha just before going to the prison on the charges of sedition. In praise of his services, Gandhi wrote, and I quote him, "No other leader has so much influence of his leadership in any province as Rajendra Prasad Babu has in his province." In 1930, the British government arrested Prasad for taking part in the salt satyagraha. He was, however, released in 1934 before completion of his prison term, as the government urgently needed his services for rendering help to the victims of the earthquake that had hit Bihar. He became the confidant of the whole country because of the reputation and trust gained by him for his work and service during the days of the earthquake. He established himself as the emissary of peace in Bihar, and through Bihar, he would later become an emissary of peace for the whole of India. About this work, Gandhi wrote in Navjivan, and I quote, "If the leaders of all the provinces assist me the way Bihar Ratna Rajendra Babu is assisting me by promoting Charkha and Khadi, I assure you that Swaraj will be attained soon," unquote. For the first time, he was elected as the president of the All India Congress in 1935 in recognition of the skill and ability demonstrated by him in conducting relief operations in the earthquake hit Bihar. As chairman of the Patna Municipal Corporation, he wanted to initiate many programs aimed at providing better civic facilities to the people. But the paucity of funds and opposition to the levy of fresh taxes did not allow him to make much headway with the proposals. Consequently, he resigned. In 1930, when he was undergoing a long imprisonment following his participation in the salt satyagraha, he continued with his dedicated social work, which forced the British government to release Prasad to enable him to lead the committee which was engaged in the relief work of the earthquake disaster. Prasad immersed his heart and soul into the relief work and was able to collect a whopping amount of rupees 38 lakhs within a short span of time. On the other hand, the Viceroy could muster only 1/3 of what Prasad's total collection was, despite the power, position, status, and resources at his disposal. The whole nation appreciated and took note of the zeal, sincerity with which Prasad rendered the relief services. When the Constituent Assembly was established in 1946 to frame the Constitution for Free India, Dr. Rajendra Prasad, who had been elected to it on the Bihar province, was installed as president of the wish. Paying compliments to Prasad on his Sarojini Naidu points out, and I quote, "Rajendra Prasad has descended spirituality from the great Buddha, the embodiment of compassion, understanding, sacrifice, and love. In this house, where everyone had said with conviction that he would be the guardian of the father of the house, I conceive him not as one with a flaming sword, but an angel with a lily, which wins victories over the hearts of men, because in him there is essential sweetness that is part of his experience. There is an essential clarity of vision, creative imagination, and creative faith that brings him very near the feet of Lord Buddha himself," unquote. In his presidential speech as the Congress president in 1934, Prasad had specifically said, and I quote, "There is no other principle than to have firm faith in truth and non-violence. And it is the firm resolve of the people of our country that it is not the exploiters, but the powers exploiting the people of the country which are to be rooted out." On another occasion, Prasad said, I quote, "We want our own prosperity, but not at the expense of the prosperity of others. We want our rise, but do not want anyone to be done away with before we want to rise. We want to progress, but not by aggression. We want to be free, and we want at the same time to ensure freedom to everyone else. That is the meaning and the principle of ahimsa, on which our whole life and culture have been based, and which have been the greatest contribution.
if I may say so, to political thought, to religious thought, to moral thought, to the world that any nation has made, unquote. And this same principle of secularism, his idea, his belief in Satyagraha, he continued pursuing while holding on to the highest office of the President of India, not once but twice. So no wonder his innate integrity, purity of character, humility and devotion, love of humanity, and depth of vision mark him out as a towering personality. In fact, Nehru, while summarizing his political career, he goes on to say, and with this quote I will end, that the first 12 years of Republic of India will always be remembered as the history of Rajendra era, unquote. Thank you. You really opened Rajendra era before us. Not that very little is known about him, but very little is talked very often about him. So it was very nice to listen to your lecture. It will be highlighted the important role that Rajendra Prasad played during the freedom struggle. And I think the panelists are done with, except myself. So I'll end up with a few words, and then this will open for questions. I almost covered the points that I wanted to make. I'll just end up with the literary text and the role played by certain leaders, which has impacted the freedom struggle and India after independence. Actually, we all dreamed of one India, which has been talked about by all the panelists. And when I opened my remarks, I said, unfortunately, one India, the idea of one India got the first beating when the partition took place. The division was on the basis of district-wise Hindu and Muslim majorities. What followed was a human tragedy, where perhaps the political purpose was served, but not the popular one. Our writers then sought to diffuse and contain the tensions by depicting the emotions and sentiments of the people, and thus aiding a healing catharsis. The social repercussions during the partition period have been more effectively depicted in literature than in media or in political commentaries. That's what, as a writer, I feel. So I don't think political history writers have delivered more authentic information than the writers like Saadat Hasan Manto or Rajendra Bedi or Kishan Chandra and many more, of course, nationwide. The trauma of the wounded and fragmented society then continues to haunt the people, as is evident in the non-stop partition writings that kept coming from the veterans like Kamleshwar, Bisham Sahani, until now when Gulzar Saab published his book, Do Log. Their writings are to be seen as the cultural texts because they depict the cultural layers of understanding. The impact of these creative writings is certainly more than the insightful writings of Pandit Nehru or Mahatma Gandhi. Nevertheless, we have come to terms to live in the present Indian dominion as Bharat, that is India. Of late, we hear a cry let out from various corners of this diverse country, lamenting that our nation is losing on values. I'm tempted to quote our spiritual leader, Vivekananda, who wrote, and I quote, "I love my nation. I cannot see you degraded any more than you are now. Therefore, I am bound, for your sake and for truth's, to cry, hold."
and to raise my voice against this degradation of my race. Give up these weakening mysticisms and be strong. The truths of the Upanishads are before you. Take them up, live up to them, and the salvation of India will be at hand. I unquote. These are the literary texts that have influenced the generations, and I think our literary texts have a great role in building up the nation that is India. I only hope we learn our lessons sooner the better. We all live in a democracy, and we all think we are free. We have a freedom of every kind, yet people like me and you have to struggle to defend the right to freedom of expression. But this has not been the case of the recent years. It has been happening right from 1947, I would say. Earlier, it was a part of freedom struggle, but even later on, we had to keep on, and we will have to continue our fight for freedom of expression. Friends, we have been discussing literary texts, but I always have been saying, and again I repeat, of course, it's not my own thought, but my belief that the best book ever produced in our country is the Constitution of India. And we have to protect our constitutional rights, particularly the fundamental rights. If we protect our fundamental rights in toto, then I don't think we can think of anything else. We will have the best of India and we can be proud of our country internationally. Yeah. But whether we have, if we believe in, we have to fight for inequality, against inequalities, the equality, the justice, the liberty, and fraternity. And liberty, yes, more important because we need freedom of not only freedom of expression, freedom of every kind. And we believe that we live in a democracy. Democracy is, of course, democracy means people get the freedom. But unfortunately, we are not realized. We in democracy get the freedom to choose our own chains. Friends, I thank Sahitya Academy for giving me this opportunity to address the gathering and be on the panel. I really thank and I feel proud of my panelists who have expressed themselves very well, and the audience for giving a patient hearing to me also. And though I know it's time for the lunch, but then still they have enough time for question and answers. Yeah. Thank you, Murtuji. And as I've been telling, those who want to ask questions, please raise hands. Those who want to discuss anything, they have their opinion, share their opinion, etc. There is always Dr. Moza is a long-time friend. He is always very helpful to anyone and everyone. So he will always discuss. He will always open to discuss or whatever you want to say. But those who want to ask questions, please introduce yourself and ask question briefly. Anyone? No questions. Maybe in the thought from other panelists. In fact, to begin with, when Dr. Archana Singh spoke about the thoughts she had, but then she also wanted to talk about something, some poetry or something. Why don't you complete it? Because I think she took less time thinking that she will overrun. But then. No, actually, I was confused and I thought I should sum up in 15 minutes. So I thought suddenly I'll get a check and I have to conclude. So it's better to. Okay, I understand. Yeah, but I don't think because now if I'll read out those in pieces, so that won't make sense. That's fine. But if someone wants to know something more about, I'm okay. Yeah, 1 second. Just one gentleman would ask this. Listening all three panelists and the chair, it was a good experience. 3-4 individuals have come to the presentation. Rajan Prasad,
Gandhi, Nehru, Subhas, and Ram in that context, in the folklore and the mythology context. So my question is, because there is no question, so we should continue some fruitful discussion. How the panelists look at the role of individual in history? How the individual's role and how the circumstances play the role? How do you think? Thank you, all of them. Dr. Moses, you can start. Well, if you mean individual, you mean common man? Common men or maybe great men? I think it has influenced a great, particularly these literary personalities that we have had in our leaders, like Jawaharlal Nehru or Vinayak Damodar Savarkar or Mahatma Gandhi himself. They were great writers. They were our political leaders. I think that made a lot of difference. They have influenced particularly writers' fraternity a lot. I myself grew up reading all of them. My views are formed because of their writings. But then equally, they have influenced the common men of this country, men of the soil. I think the poorest of poorer farmer in India knows what stood for, what Nehru stood for. That is the fallout of their contribution to literature, to India's freedom struggle. I think it is reflected in our folklore also to a great extent. I think that great leaders are great, not because they are really great, but because of the, I will just take your idea of individuality, right? So the individual comes to the fore only when that individual person is able to attract and speak to a large section of society. So that greatness is installed by this idea, how far your ideas can travel. And in that context, the writings, what Sir said, becomes very important. The writings, the speeches that one delivers. So the individual role is always very important, be it history or be it any political journey. But individual can never do anything alone. Individual requires support and a rapport that Gandhi managed to do, right? So Gandhi was Gandhi not because of his Gandhian values, because Gandhian values are not, something that was copied, that was being copied, that Gandhi had a copyright on. But those values are always present, and Gandhi just imbibed those values which were present, and that those values appeal to the masses. And that made this individual figure a great hero, a hero of our national freedom struggle. Dr. मैं इस प्रश्न को थोड़ा दूसरे ढंग से गांधी और नेहरू दोनों मतलब मैं इस तरीके उसमें इसका जवाब दूंगी तो स्त्रियां जो थी वो गांधी और नेहरू दोनों ही उनकी मुक्ति की बात कर रहे थे पर नेहरू का जो फ्रेम था उसमें वो उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट से पब्लिक स्पेस में लाने के लिए पूर्ण मुक्ति की कामना कर रहे थे लेकिन ये बहुत अगर इंडिविजुअल की बात स्त्रियां कैसे उसे रिसीव कर रही थी तो गांधी ज्यादा पॉपुलर थे अगर आप फोक सॉन्ग्स में भी सुनिए तो वो अपने पति को या अपने पार्टनर को गांधी बाबा के आंदोलन में जाने के लिए नेहरू कहीं ना कहीं उनके लाइफ वर्ड को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे स्पेशली जो रूरल वुमेन या सेमी लिटरेट वुमेन थी मैं बहुत जो एलीट क्लास उसकी बात नहीं कर रही हूँ तो गांधी इंडिविजुअल जनमानस तक स्त्री मानस तक ज्यादा गहरे पहुंच पा रहे थे और बार बार वो उनके जनमानस लोकमानस और उनके लाइफ वर्ड में बहुत सशक्त बार बार उभर के आगे आ रहे थे I feel personalities and the drama during Independence Day or struggle, all those big leaders were understanding each another and they were knowing each one's capacity, how powerful or how workaholic is another. Especially, I'll say about one good book
a bunch of old letters written by Nehru. There are many letters from Motilal Nehru to Gandhiji, Subhash Bose, and those letters are extensive letters. Many letters are more than 25 pages. In one letter, Nehru said Subhash that the controversy between us three, that is Gandhi, me, and you, is taking unavoidable shape of a Shakespearean tragedy. These words are Nehru's words. So I feel that though that era was outstanding era, the cause was very noble, and आज के जैसे राजनीति की बातें नहीं थी. Everybody was fighting for national good on his own line. And really, it was a great saga or great epic carved out by God or some powerful thing like God. Thank you. Any more questions? Okay. With this, we'll conclude. We will break for lunch now. We assemble here at 2:30 for the session on Mahatma Gandhi, Ram Rajya, and Indian independence movement. So that we chat by Kapil Kapoor. Thank you.
हेलो। हाँ, ये BRT में थोड़ा प्रॉब्लम है, दूसरा लगे। हाँ, ठीक है। नहीं आ रहा। Side by side, keep it side by side. Otherwise, how will this follow cover? आगे रखेगा तो इसको कैसा आगे आ सकते हैं। बगल में कोई नहीं, हम साइड कर लेंगे। कौन सी टीवी का है? दूरदर्शन। अब बताइए क्या प्रॉब्लम? ये नहीं तो ये साइड में चलो तो ये भी आने जाने वो अगर नहीं यार, अगर कभी आप भी कवर कर दीजिए खत्म। ये तो करता लाइव स्ट्रीम करता है ना। हाँ तो कोई भी दिक्कत होगा ना, हम लोग कर लेंगे मिलकर, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा साइड कर लेंगे, वो लाइव स्ट्रीम में कंटिन्यू रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका फ्रेम में आ रहा है क्या? ना नहीं आएगा। नहीं आ रहा ना। नहीं ये वो साइड पे लगा दो, जो कुर्सी को सरफ लगाओ। हाँ कर देंगे, ऐसा साइड पे कर दो। वैसे ही करेंगे, वैसे ही कोई है बुलाइए। हेलो एक काम करो आगे भी ये साइड और आप भी पीछे लाओ, आप पीछे लो पीछे लो और पीछे लगाओ भैया, मेरे इक्वल लगाओ और मैं आगे जाऊंगा। पूरा नहीं मैं कपड़ों में और इधर करूं सर? कुर्सी पर साइड ठीक है सर। ठीक है। ठीक है ठीक है अभी
भाड़े भी सब क्या तो बोल रही क्या बोलने हैं क्या पहले बोले अब मैं ये देखने वाला रहा वो देवा आजा आजा मैंने बहुत खा क्या बोल चेयर उड़ा खाली शुरू हेलो, मेरा नाम आदित्य नायक है। मैं यहाँ साहित्य अकादमी में इंडियन लिटरेचर सेक्शन का असिस्टेंट हूँ। फिलहाल अभी हमारे साहित्य उत्सव चल रहा है साहित्य अकादमी के द्वारा, जो 16 तारीख को खत्म हो रहा है। इसमें 14 से 16 हमारा मेन नेशनल सेमिनार और अभी फिलहाल चल भी रहा है। तो इसके मेजर हाईलाइट्स ये है कि लाइक हमारा इसमें इंडियन लिटरेचर का जो सबसे पुराना इंग्लिश मैगजीन है, जो 24 भाषाओं में छपा है और रिलीज हुआ पिछले साल जो हमारा कोरोना के टाइम एक साल हमारा इश्यू चल रहा था, एक साल उससे बड़ा और सभी का तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं कि आप आए इसमें शरीक हो और सबके साथ जुड़े।
क्या हुआ? ऐसे कहने जैसे कोई निर्णय हो गया हुआ नहीं कहते 2 बजे 10 बजे क्या करें? 2 बजे नहीं मिला तो मेरे को कहते हैं कि 2 बजे पढ़ के यहाँ आया आपका छपा है ये आपका लेक्चर छपा है तो ये हिंदी में होगा क्या अंग्रेजी में किसी से पढ़वा लूंगा मैं आपको last voice. Last voice. Last I'm sitting here, I suppose. आपके बजाय तो सब इसलिए मैंने तुरंत हाँ करना सर थैंक यू सर मैं आपको जितना मुझसे कम आपके बजाय मैं सब अरे नहीं सर नहीं सब देखिए नियति नियति तो इससे करवाते हैं ना तो आप जवान पर जाने के लिए रिस्क चाहिए पुरोहित चाहिए मैं कभी सबके साथ आपको सूरत सर है आप just tell them what switch off चालू कर दो सर अगर गड़बड़ हो तो ये बदली का आप लोग कुछ नहीं मेरे को Good afternoon, everyone. So, welcome back to this fifth session of this national seminar. And we had seen how myths impact social structures and social movements, not only in India, across the country, and the application of the same thing into the Indian independence movement in the first session today. And the second session, how cultural texts were used by the leaders
during the independence movement, and also the leaders themselves generated, like Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, they themselves also generated cultural texts and their role in the freedom struggle. And now this session is going to focus on Mahatma Gandhi, Ram Rajya, and freedom movement. And in the first session today and the last session yesterday, there were discussions about Ram Rajya, whether Ram Rajya belongs to Mahatma Gandhi or is it somebody else, and whether the Ram Rajya itself is a myth. In the same way, democracy can be a myth. So all those discussions took place, and I think that is all very nicely have led to this session. And to in this session, how Gandhi's use of Ram Rajya as an idea, as a philosophy, in the independence movement it's a redirected masses to trace their cultural roots, especially his village, India lives in villages, etc. All those things coupled together, and along with the Ram Rajya. So it enabled masses, whether they are literate or not, it enabled them to rediscover the cultural roots. And it invited the entire thing, the entire body of Ram Rajya literature, because when I say entire body of Ram Rajya literature, I also said people borrowed in regional languages, they borrowed from Mahatma Gandhi and they used it in their own way, very innovative ways. So to chair this very exciting discussion, we have Professor Kapil Kapoor. I request Professor Kapil Kapoor to come to that. Dr. Kapil Kapoor is a former professor of English, concurrent professor of Sanskrit Studies and rector, Jawaharlal University. He served as the editor-in-chief of Indian Heritage Research Foundation, United States. He was the chief editor of Sahitya Academy's Encyclopedia of Indian Poetics. He was a visiting professor at the Irish Academy of Cultural Heritages, University of Ulster, United Kingdom. He was a former chairman of IAEA Shimla, and he has been is a recipient of many awards and accolades in his long and illustrious career. He was honored as a distinguished scholar by Narendra Pratap Singh Kalyankari Trust, Ubright Foundation, California, Shiksha Sanskrit Vishya and Ministry of HRD for his contribution to Sanskrit studies. And he has recently pleasure to have you with us. And our first panelist is Dr. Biju Chakrabarti. I request Dr. Biju Chakrabarti to come to this. And he is the Vice Chancellor of Vibha Shanti Niketan. He is a very prolific writer and scholar, and he has more than 50 books to his credit. He has got a lot of apart from those 50. And he was a president, he was nominee of President of India to the Executive Council of JNU, member of Board Studies, Navakrishna Chaudhary Institute, Utkal University, professor in various renowned universities across the globe. He was the first Mahatma Gandhi Chair for Global Non-Violence at James Madison University, Virginia, and recently appointed the EAAD professor in Germany, housed in the University of Hamburg. And next panelist, Professor Nandikishore here. I think, Nandikishore Acharya. And he is an eminent Hindi writer and former professor of science at IIT, Hyderabad. He has been a guest writer at Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya and Prakrit Bharati Academy. He has 12 poetry collections, 8 plays, 7 books on patriotism, 12 books on cultivation, political economical theory, human rights and government to his credit. He is a recipient of Puraskar, Bihari Puraskar, Sangeet Award, Subramanya Bharati Award, Maharana Kumbh Award, among others. Final panel, Professor I request Ganesh to come to that. Teacher the Sanskrit study in Delhi. He research Buddhism, Sanskrit, loss of language, etc. And he was awarded Okita Memorial Fellowship
ICCR. Now I request Professor Kapil Kapoor to take up and conduct the session. The mic is also. सबको नमस्कार। थोड़ा आप पीछे जो थोड़ा आगे आगे आ जाएं, क्योंकि नहीं तो हमको अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। नजदीक वालों के लिए धीमे बोलना पड़ेगा और आपके लिए ऊंचा बोलना पड़ेगा, है ना। थोड़ा आगे आ जाए तो अच्छा है, प्लीज। विल ऑल्सो फील दैट दे आर वर स्नग। दिस सेशन ये अबाउट गांधी जी राम राज्य लिटरेचर and freedom struggle. If I am not wrong, that's right. Gandhi ji, Ram Rajya literature and freedom movement. It's quite not easy for me to gel the three, but I'm sure, sir, the three learned scholars who are here, they will help us understand that what river runs through it all, or what thread runs through it. मैं समझता हूं कि अगर गांधी जी और उनकी फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल एक नहीं थी, फ्रीडम स्ट्रगल वाज ए वेरी कॉम्प्लेक्स रिच अफेयर। कई धाराएं थी उसमें, जैसे लेट मी यूज ऑर्डिनरी वर्ड्स, विदेशी धारा में मेरे विचार में नेहरू और गांधी वगैरह विदेशी धारा में आते हैं। आई मे बी फॉरगिवन फॉर माय स्टेटमेंट। और जो देशी धारा है उसमें मालवीय जी है, वो देशी धारा है। और देयर इज द देशी विदेशी धारा, लोहिया जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, वो है। चौथी धारा रही उस जमाने में 1910 से 47 तक धर्म की धारा, धर्म आधारित संघर्ष की धारा, जिसमें स्वामी करपात्री जी महाराज और स्वामी श्रद्धानंद जी। करपात्री जी, एज वी ऑल नो, उन्होंने तो राम राज्य परिषद 1948 में पार्टी भी बनाई थी। 1940 में उन्होंने धर्म संघ बनाया था और परिव्राजक परंपरा में पूरे देश में पैदल चल के धर्म का प्रचार। उनके 3 ध्येय थे, गो हत्या का प्रतिबंध और धर्म की स्थापना। इनफैक्ट राज्य में धर्म की स्थापना उनके लिए राम राज्य था, धर्म की स्थापना। और तीसरा उनका था कि जो नायक होगा वो देश के ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करेगा। ये 3 ध्येय थे उनके। तो राम राज्य परिषद, इलेक्शंस भी लड़े थे 52, 57 एंड विधानसभा के, एंड दे वन मेनी सीट्स, बहुत सीट्स भी थी। देन गो हत्या का आंदोलन हुआ था 1966 में, जिसमें
गोली चली थी। इंदिरा गांधी जी हम लोग सब जानते हैं, पर शायद फोरग्राउंडेड ना हो कि इंदिरा गांधी जी जब लाल बहादुर शास्त्री जी के जहर खाने के बाद ताशकंद में प्रधानमंत्री बनी थी, तो उन्होंने 2 स्वामियों से आशीर्वाद लिया था, देवरा बाबा और करपात्री जी महाराज। और कहा जाता है कि करपात्री जी ने उनसे कहा था कि आशीर्वाद दिया था और कहा था कि गोहत्या बंद कराना। तो जब 66 में हुआ तो गोली चली और 100 के ऊपर साधु की डेथ हुई और 50,000 साधुओं को करपात्री जी समेत तिहाड़ जेल में रखा गया। क्योंकि ये राम राज्य की चर्चा इसमें आएगी, तो जरा हमको समझना है कि कौन से परिप्रेक्ष्य में हम राम राज्य का चिंतन कर रहे हैं। और करपात्री जी उस दिन जब गोली चली तो वो रो रहे थे। He stood up and he was crying, and then he had cursed. He had cursed. उन्होंने कर्स दी थी that you will, इसको बंद करा दो यार, that someday some sadhu or sannyasi will come and he will finish this politics of your politics. इंदिरा गांधी को कर्ज किया था। तो मैं करपात्री जी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि राम राज्य की अवधारणा मेरे विचार में तो गांधी जी ने राम राज्य और भी कई हिंदू अवधारणाओं का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि हिंदू जनता हिंदू महासभा को वोट ना करके कांग्रेस को वोट करे 47 से पहले। और हिंदू जनता वैसे भी कांग्रेस को वोट करती थी इसलिए कि कांग्रेस जोर जोर से कहती थी कि हम देश का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होने देंगे। और हिंदू जनता समझती थी कि अगर मुस्लिम लीग की तरह हम भी हिंदू महासभा को वोट देंगे तो बंटवारा तो होगा ही होगा, इसलिए कांग्रेस को वोट देते थे, जिसको कांग्रेस ने बाद में भुनाया, गलत इंटरप्रिटेशन करके भुनाया भी। पर जो भी है, ये गांधी जी की अवधारणाओं को इस्तेमाल, क्योंकि अब मैं बाद में समाप्त करूंगा कि अगर हम देखें कि बड़ा जो उत्कृष्ट साहित्य है वो क्या गांधी जी के चिंतन या जो फ्रीडम स्ट्रगल गांधी जी वाली ही थी उस पे उत्कृष्ट साहित्य बन सकता है, बना है क्या? पार्टीशन पे बन सकता है क्योंकि इतना दुख। और राम राज्य पे बन सकता है क्योंकि वो एक आइडियल है और बना भी, रामायण खुद राम राज्य पे है और इस तरह राम कथा जितनी है राम राज्य पे है, बन सकता है। क्यों ये एज भी हमारी जो है, ये एज एपिक एज तो है नहीं, ये वो क्या बोनजाई प्लांट्स में बोनजाई और कविता में वो जो 4 लाइन की जैपनीज क्या है वो हाइकू। तो ये सिविलाइजेशन हाइकू और बोनजाई की है। तो कितना एपिक लिटरेचर क्रिएट होगा और कौन सी थीम्स पे होगा। हमारा देश जो है इतनी पुरानी सभ्यता है कि हम बहुत कुछ पचा जाते हैं। हमने तो 47 भी पचा लिया, कोई बहुत बड़ी चीज निकली नहीं उससे। तो मैं अब भी ज्यादा बोल गया, क्षमा चाहता हूं। मैं सबसे पहले भाई साहब विद्युत जी वाइस चांसलर हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, बहुत विद्वान हैं और हम सब आपको सर सुनना चाहते हैं, आपके विचार आप हमें थोड़ा समझाइए इस धारा को। धन्यवाद।
अगर मैं खराब बोलूँ खराब स्पीकर की तरफ से, तो जितना गुस्सा सर ने तो शुरू किया हिंदी में। देखिए मैं बंगाली हूँ, मैंने 30 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बावजूद भी जब हिंदी बोलता हूँ लोग कहते सर आप बंगाली हो। तो क्योंकि बांग्ला में लिंग नहीं होता है, मैं कभी समझता नहीं कि पुलिस कैसे स्त्रीलिंग हो सकता है, तो इतना पीटते हैं, लेकिन हिंदी में पुलिस स्त्रीलिंग होता है। तो इसीलिए लिंग के बारे में कुछ गड़बड़ हो जाए कि बांग्ला में लिंग होता नहीं, तो इसीलिए मेरे को क्षमा करें। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा सर का एक रास्ता फॉलो करूंगा हिंदी में कुछ बोलने के लिए। सर ने तो बोल दिया, मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। तो ये जो दुविधा मेरा मन में अभी हो रहा है, जो मैं अपना जबान पे आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा, हिंदी इंग्लिश में अगर अलाउ किया जाए थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ। मैंने सर हिंदी में बोलूंगा सर, आपका सामने मैं इंप्रेस करने के लिए हिंदी में बोलूंगा। एक दुविधा आ रहा है मेरा मन में, ये दुविधा हमारा नहीं है, पूरा हिंदुस्तानियों के दुविधा है। ये दुविधा समझाने के लिए मैं एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, जो शेर कई पुराना है, 1857 में लिखा गया। ये जो शायर थे वो बहुत कम उम्र में मर गए, क्योंकि मैंने सुना ये लोग शायर तभी बनते हैं ज्यादा पीते हैं ज्यादा खाते हैं, तो कम उम्र में भी चले जाते हैं, भगवान का प्यारा हो जाता है। तो यही भाई साहब ने लिखा, सिख तो ली आगे बढ़ के, सिख तो ली आगे बढ़ के, अंग्रेजी जबान डर है कि गूंगा हो जाएगा हिंदुस्तान। तो मेरा ये सोच है पहले ये, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हिंदी में बोलने से आप लोगों से बातचीत हो जाता है, इंग्लिश में बोलने से भाषण दिया जा सकता है लेकिन बातचीत नहीं होता है। लेकिन मैं सर के सामने मैं भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मैं बातचीत करना चाहता हूँ। सर तो बता ही दिया कि क्या है, तो इसका जो निष्कर्ष मैंने निकाला वो भी मैंने फैज अहमद फैज साहब का एक 2-4 लाइन बोल के मैं उसका शुरू करूंगा। फैज अहमद फैज बताया कि किस तरह जिंदगी मनुष्य को देखना चाहते हैं। तो उसका जो सोच था फैज अहमद फैज का, उसमें ये बताया था, जब पुजारी को मंदिर में रहीम नजर आएगा, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आएगा, दुनिया का सूरत बदल जाएगी जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आएगा। तो ये जो इंसानियत, ये राम राज्य के बारे में सबसे जो मेरा दिमाग में आया कि गांधी जी राम राज्य के बारे में बात क्यों किया, क्योंकि इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हिंदुस्तान में उस टाइम भी लैकिंग था थोड़ा बहुत, आज तो लैकिंग है ही, आपको दिखाई दे रहा है। और राम राज्य जो आइडिया, ये आइडिया के बारे में सर ने कहा जी ये आइडिया पहले भी था, जरूर था। अगर गांधी का लेख अगर पढ़ें तो पता चलेगा कि गांधी जी 2 लोगों का जिक्र किया जब राम राज्य के बारे में लिखते थे। एक किताब हम लोग पढ़ते हैं सभी लोग, जो 1516 में लिखा गया। ये किताब का जो लेखक था उसका नाम था टॉमस मोर। टॉमस मोर साहब लिखा किताब द यूटोपिया। ये यूटोपिया टॉमस मोर पता है लॉर्ड चांसलर थे, एंड उसके बाद हेनरी VIII का जो दूसरा शादी का वो माना नहीं, इसलिए उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो टॉमस मोर साहब ये यूटोपिया लिखा। यूटोपिया में क्या स्टोरी है, एक शिप ब्रेकेज हुआ और उसके बाद लोग स्विम करके एक द्वीप में आया, एक आइलैंड में आया। आइलैंड में जो देखा वो है राम राज्य। कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, कोई भेदाभेद नहीं है, कोई जात पात का भेदाभेद नहीं है, मतलब ऐसा एक आइडियल समाज के बारे में टॉमस मोर ने बताया। आपको पता है राम, जब कार्ल मार्क्स लिखा अपना कम्युनिज्म के बारे में, टॉमस मोर का जिक्र किया, तो गांधी जी भी टॉमस मोर का जिक्र किया। मेरे हिसाब से एक इंटेलेक्चुअल सोर्स ये है।
और दूसरा इंटेलेक्चुअल सोर्स क्या है, गांधी जी खुद लिखा, आपने अगर देखेंगे गांधी जी का स्पेशली ऑटोबायोग्राफी में इसका जिक्र है, बट ज्यादा जिक्र है उसका स्पीचेस में। हेनरी मेन का एक लेक्चर है, ऑक्सफोर्ड में दिया था 1873 में। इसको 6 लेक्चर दिया, टाइटल है रिपब्लिक ऑफ एशिया। रिपब्लिक ऑफ एशिया, ये रिपब्लिक एशिया में क्या दिखाई दिया, ये गांव वाला, गांव में कैसा रिपब्लिकिज्म उस जमाने में, वो 15th-16th सेंचुरी का बात कर रहे हैं, उस जमाने में गांव में क्या था। जैसा गांव में कोई दुख था, मान लीजिए हमारा गांव में मैं ज्यादा चावल उगाता, राइस, बट आपका गांव में गेहूं आप उगाते हो, तो दोनों गांव में अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अपना गांव का चावल का कमी मैं पूरा करूंगा और आपका गांव का गेहूं का कमी मैं पूरा करूंगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग वाला बात, ये सैमुअल हेनरी मेन में उसका किताब में डिटेल लिखा, 6 लेक्चर है, बड़ा 400 पन्ना का किताब है। तो गांधी जी इसके बारे में भी जिक्र किया। लेकिन इसमें जो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष मैंने जो सिनॉप्सिस दिया उसमें मैंने लिखा अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से पहले जो था, देखिए गांधी जी के बारे में पता नहीं आप लोगों का क्या धारणा है, मेरा है गांधी जी एक पॉलिटिशियन हुआ करता था। बेसिकली ही वाज ए पॉलिटिशियन, बट ही वाज मेड ए बाबा लेटर ऑन, इसलिए अंबेडकर इसके बारे में बहुत क्रिटिसाइज भी किया। आप जानते हैं 3 लोग गांधी जी का बापू नहीं कहते थे, एक अंबेडकर साहब, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरा मिस्टर सावरकर। ये तीनों लोग कभी गांधी जी को गांधी जी नहीं कहते थे, बापू नहीं कहते थे, मिस्टर गांधी। तीसरा कौन सा? सावरकर, 3 लोग। तो मेरे हिसाब से देखिए गांधी जी को जो मैं जब एसेस करता हूँ, जो मैंने लिखा अभी तक, उसमें मेरे हिसाब से यही असेसमेंट मैंने किया, गांधी जी वाज द स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो मेरे हिसाब से गांधी जी बाबा नहीं है, गांधी जी भगवान नहीं है, गांधी जी एक पॉलिटिशियन थे, जिसको मैं कहता था एन ऑर्डिनरी मैन विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज। यही गांधी जी है मेरे हिसाब से। तो उसी आधार, यही पर्सपेक्टिव में मैं राम राज्य का जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ 2-4 शब्द। पहला जो आइडिया था, आप पहले सवाल मेरे दिमाग में आया, गांधी जी सत्याग्रह क्यों किया, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो गांधी जी का सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका जो किताब है वो देख लीजिए। उसमें गांधी जी ऐसे कंपटीशन करवाया, एंड मगनलाल गांधी जी, पहले गांधी जी प्रेफर करते थे दूराग्रह, मतलब हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूर दूर से मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मगनलाल गांधी जी इसको सत्याग्रह नाम दिया एंड वही एक्सेप्टेड हुआ, गांधी जी एक्सेप्ट किया सत्याग्रह। अब नेक्स्ट सवाल पूछ सकते जो गांधी जी को पूछा गया सत्याग्रह क्यों, तब कह रहे देखिए ये हिंदुस्तानियों को जो साइकी है इसका साथ ये मिल जाता है। तो हिंदुस्तानी का अगर आप ये कहेंगे पैसिव रेजिस्टेंस तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सत्याग्रह कहें तो तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट है। तो इसलिए गांधी जी पॉलिटिशियन होने के बावजूद इस तरह एक्सप्रेशन ढूंढते थे। आज भी हो रहा है, आज भी देखिए पॉलिटिशियन लोग जैसे बताया ना, कई वर्ड गेन्स मोमेंटम, कोई वर्ड धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे सर ने बताया देशी विदेशी, ना गांधी जी देशी विदेशी का कॉम्बिनेशन जरूर थे, क्योंकि गांधी जी एनलाइटनमेंट का बात करते थे जो यूरोपियन, और एट द सेम टाइम रामायण महाभारत जैनिज्म बुद्धिज्म इसके बारे में बात करते थे। तो इसका मतलब है गांधी जी ऐसा एक पॉलिटिशियन थे जो कई धाराओं के एक साथ लेके चला, क्योंकि गांधी जी को पता था हिंदुस्तान का जो फ्रीडम मूवमेंट इसको सफल बनाने के लिए आपको इस तरह एक अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहिए। तो राम राज्य ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट के साथ हिंदुस्तान का जो साइकी है, मानसिकता जिसको कहते हैं, माइंडसेट जिसको कहते हैं, उसका साथ एक लगाव था। तो ये मैंने पहला जो पॉइंट बताना चाहता हूँ कि गांधी जी जो कितना स्मार्ट पॉलिटिशियन थे, इसीलिए इस तरह शब्द चुना, इस तरह एक्सप्रेशन कॉइन किया, जिस एक्सप्रेशन के साथ हिंदुस्तानियों को जो मानसिकता उसका साथ
एक लगाव तैयार हो जाता है। ये पहला वाला बात। दूसरा बात क्या, गांधी जी जब राम राज्य की बात करते हैं क्या क्या आइडिया देना चाहते थे, आपने अगर उसके बारे में कहोगे, देखोगे तब देखेंगे वो कहा कि मेरे हिसाब से राम राज्य ऐसा एक राज्य है जहां पे भगवान दिखाई देता। लिखा that I see God in राम राज्य। Now इस सेंटेंस का मतलब समझने के लिए आपको आगे पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा। Now गांधी जी का गॉड कौन थे? राम थे, ईशन थे, जीसस थे, कई जितना भगवान होता था हमारा दिमाग में सभी है। पर गांधी जी का जब ये कहा गया कि आपका भगवान, तो राम को भगवान मानता है, तब गांधी जी नहीं, राम को मैं भगवान नहीं मानता हूं, पर राम जो लक्ष्मण जो एट्रीब्यूट जो गुण था, एक गुण को मैं भगवान मानता था। तो बताया आई एक्नॉलेज नो गॉड अदर देन वन गॉड ऑफ ट्रूथ एंड राइचुअसनेस। सत्य एंड राइचुअसनेस को सर हिंदी सदाचार, 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 सत्य एंड सदाचार। तो सत्य एंड सदाचार राम राज्य का एक दो ऐसा क्वालिटी है, दो ऐसे गुण हैं जिसके बारे में गांधी जी अप्रिशिएट किया। क्यों? गांधी जी का हिसाब से, गांधी जी का भावना से राम जी गुण रिप्रेजेंट करते थे। सेकेंड बता ये वेदर राम ऑफ माय इमेजिनेशन। अब देखिए सेंटेंस गांधी lived on this earth. The ancient ideal of Ramayana is undoubtedly one of true democracy, in which the meanest would be sure of swift justice without an elaborate and costly procedure. मतलब तीसरा डायमेंशन आ गया, न्याय। ये जो न्याय है, ये न्याय क्विक न्याय होता था, क्विक डिसीजन हुआ करता था। That is what गांधी जी conceptualized. हमें लगता है इसके बारे में आपको कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गांधी जी ने नहीं दिया। ये गांधी जी का सोच दैट राम राज्य ऐसा एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस होगा जहां पे इंसानियत जरूर होगा, साथ साथ वर्च्यू, धर्म, नॉन वायलेंस, अहिंसा, इक्वालिटी, समता, ये तीन चार क्वालिटी होना चाहिए। तो इसका देखिए, इसका साथ साथ आप अगर एनलाइटमेंट वैल्यूज का ऐड करें, जो यूरोपियन डिस्कोर्स, जो सर ने बताया देशी विदेशी धाराएं, ये देखिए इसमें विदेशी धाराएं हैं, क्योंकि एनलाइटमेंट फिलॉसफी में अगर आप देखेंगे तो एनलाइटमेंट फिलॉसफी में आप ब्रिटिश ट्रेडिशन देखें, फ्रेंच ट्रेडिशन देखें और यूरोपियन ट्रेडिशन देखें, सभी में इक्वालिटी का बात बार बार कर रहा है। लेकिन इक्वालिटी का बात अगर करते फिर भी कॉलोनियलिज्म क्यों होते? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है एनलाइटमेंट थियरी का। क्योंकि आपको पता है, अगर एडमंड बर्ग का आप स्पीच सुने, जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आ रहा है, तो एडमंड बर्ग कहा भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान पूरा बारबेरियन भरा पड़ा हुआ, ये बारबेरियन को सिविलाइज करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म सही है। तो वहां पे इक्वालिटी शब्द का बात कहाँ है? तो इसीलिए वो तो दूसरी डिबेट आ गया, उसके लिए तो बहुत हिस्टोरियन लोग बहुत डिबेट किया। लेकिन गांधी जी के बारे में इक्वालिटी का बात जब कहा, तब उसमें देशी विदेशी धाराएं एक हो गया। तो राम राज्य मेरे हिसाब से एक ऐसा एक एक्सप्रेशन जहां पे सर का जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, देशी और विदेशी धाराएं एक साथ होने का एक आधार, एक सिस्टम, जो सिस्टम में ये क्वालिटी होना चाहिए। देन उसका बाद मेरे हिसाब से और एक चीज, अभी मैं हिंदुस्तान आ गया, हिंदुस्तान में आके गांधी हिंदुस्तान से क्या क्या लेने की कोशिश किया। गांधी जी पहले कहा कि राम राज्य ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जहां पे हिंदू मुसलमान का जो विभेद, जात पात का जो विभेद, मतलब गरीब अमीर का जो विभेद, ये विभेद नहीं होना चाहिए। तो राम राज्य ऐसा एक राज्य है, ऐसा एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस है जहां पे इस तरह जो डिवीजन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दोनों डिवीजन से बाहर होगा, अर्थात बेसिकली एब्सोल्यूट इक्वलिटी का बात कर रहा है। देखिए बीच बीच में मेरे को लगता है कि थॉमस मोर साहब लगता है ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया होगा। ये यूटोपियन, देखिए ये कॉन्सेप्चुअली इट्स एन यूटोपियन आइडिया, बट जब लोग पॉलिटिशियन लोग अपना
विचारधारा को लोगों के सामने पेश करते हैं तब सोचते हैं भाई हमारा विचारधारा लोग कैसे मानेंगे, तो मानने के लिए कई बात करते हैं, आजकल भी करते हैं। ये देखिए मेरे को इलेक्शन जितवाइए, मैं 5 साल कर दूंगा, 5 साल दिखाई नहीं देता है, 5 साल के बाद फिर वापस आ जाता है ना। मैं गांधी जी को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा पॉलिटिशियन लोग ऐसा करते थे, लेकिन गांधी जी को पता था भाई हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान में जो लड़ाई ये बड़ा दलित और नॉन दलित में जो लड़ाई बड़ा गांधी जी वर्णाश्रम मानते थे। फिर जब अंबेडकर साहब दलितों के लिए रिजर्वेशन के लिए मांगा, हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी अनशन पे बैठ गए, क्योंकि ये विभेद नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही वाज ए पॉलिटिशियन। ऑलरेडी मुसलमान चले गए, मुसलमान लीग के साथ चले गए, तो अगर दलित भी चले जाए तो जो कांग्रेस प्लेटफॉर्म था वो और भी वीक हो जाएगा। तो ये सब बोलने का एक ही कारण है कि गांधी जी का जो सोच है, आप पूरा बाबाडम होके सोचने से गांधी जी को समझ नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से। पता नहीं सर नाम किशोर जी है या रजनीश जी है क्या आप बोलेंगे, लेकिन मेरा हिसाब से यही सोच है, क्योंकि आई स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वहां से मैंने गांधी जी को देखता है पॉलिटिशियन जो 20th सेंचुरी में पैदा ही नहीं, ऐसा एक पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूं। देन अगर कॉन्सेप्चुअल से आप ये रियलिटी, एम्पिरिकल रियलिटी देखना चाहते हैं तो गांधी के दिमाग में क्या था। दुख की बात है ये आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी ने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जो इंपॉर्टेंस दिया गया 1992 में विद द एडॉप्शन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट, द आइडिया ऑफ विलेज स्वराज। गांधी जी का राम राज्य का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन अगर एम्पिरिकल मैनिफेस्टेशन कोई जानना चाहते हो तो गांधी जी का एक छोटा सा बुकलेट है जिसका टाइटल था विलेज स्वराज। दिस इज Gandhi was interested not in mass production, वो तो कैपिटलिज्म का बात हो गया। गांधी जी was interested in production by the masses, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन प्रोडक्शन। तो इसीलिए क्या है, लोगों का काम मिलेगा, अगर काम मिलने से लोग एंगेज हो जाएंगे, एंगेज होने से आप पुराना बात है ना आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप, वो नहीं बनेगा। तो ये पहला जो फीचर है विलेज स्वराज के पहले फीचर। सर टाइम कितना? दूसरा बताया गांधी जी का जो राम राज्य का जो सेकंड फीचर है विलेज स्वराज से मैंने जो लिया, द आइडिया ऑफ ब्रेड लेबर। नाउ इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट गांधी जी ने लिया जॉन डी रास्किन से। जॉन डी रास्किन का अनटू दिस लास्ट, इसका ट्रांसलेशन गांधी जी ने किया सर्वोदय। ये सर्वोदय किताब अगर देखेंगे इज बेसिकली ट्रांसलेशन ऑफ जॉन डी रास्किन अनटू द लास्ट। वहां पे ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट है। ब्रेड लेबर मतलब आप काम करोगे तो अभी आपको खाना मिलेगा। मतलब ब्रेड अगर आपको लेना है, मतलब खाना लेना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। और काम के लिए गांधी कोई विचार नहीं किया, रास्किन का आइडिया है। ये मान लीजिए जो स्कैवेंजर है वो भी काम है, जो लॉयर है वो भी काम है, जो टीचर है वो भी काम है, जो व्हाट यू डू सीरियसली। देखिए आजकल लोग कहते हैं नौकरी तो मिल गया, लेकिन ये ना मेरा जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिला, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, इस तनख्वाह में क्या होगा वगैरह वगैरह। तो मतलब दुखी आत्मा जब काम करता है काम सही नहीं होता है। तो गांधी जी का जो आइडिया ऑफ ब्रेड लेबर, ये आइडिया मैंने बताया गांधी जी का खुद का आइडिया नहीं है, ये रास्किन साहब का आइडिया है। रास्किन साहब का आइडिया लेके गांधी जी बताया कि राम राज्य जो मैंने सोच रहा था विलेज स्वराज के बारे में, उसमें लोगों को काम करने का पीछे उद्देश्य यही होगा कि मेरे को काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो खाना खाऊंगा पक्का, साथ साथ समाज का भी खाना खिलाऊंगा। ऐसा एक सिचुएशन के बारे में सोचा। उसके बाद समता, इक्वालिटी के बारे में गांधी जी बार बार
बात करते थे, क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में इक्वालिटी का अगेंस्ट जो फोर्सेस ज्यादा पावरफुल होता है। कई तरह का डिवीजन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पार्टली वर्टिकल, पार्टली हॉरिजॉन्टल, इस तरह कई लेवल पे हमारा डिवीजन है हिंदुस्तानियों में। तो ये डिवीजन से ऊपर अगर ना हम जाएं तो हिंदुस्तान को विलेज स्वराज का जो आइडिया गांधी जी का, वो हम कभी नहीं अपना पाएंगे। तो इक्वालिटी इज एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन। देन इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आइडिया कितना लोग आज अप्रिशिएट करेंगे, आई डाउट इट, आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप। नाउ ट्रस्टीशिप आइडिया, आप देखिए अगर टाटा, बिरला, अंबानी को कहें कि भाई आपने 28 मंजिल का मकान छोड़ के एक छोटा फ्लैट में आ जाओ, नहीं आएंगे। तो गांधी जी का बात था, देखो ट्रस्टीशिप मतलब भगवान ने ये लोगों को भेजा वेल्थ को देखभाल करने के लिए। मतलब गरीब लोग देखभाल नहीं कर पाएंगे, जो वर्कर्स है लोग देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको अंबानी चाहिए, इसीलिए आपको टाटा चाहिए, इसीलिए आपको बिरला चाहिए, क्योंकि ये लोग ये जो संपत्ति है, ये वेल्थ, ये धनराशि को सही ढंग से देखभाल कर पाएंगे। तो इसलिए गांधी जी का जो अमीर के लिए जो हमदर्दी, ये हमदर्दी का पीछे कारण है ट्रस्टीशिप। अब इसके लिए आप कह सकते हैं पॉलिटिकल कारण क्या है, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस मैं बोलना चाहता हूँ। आपको पता है जीडी बिरला गांधी जी का सबसे बड़ा फाइनेंशियर था। आपने अगर जो इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप इन द शैडो ऑफ द महात्मा जीडी बिरला का किताब देख लीजिए, वहां पे कितना चिट्ठी का जिक्र किया बिरला साहब बिटवीन गांधी जी एंड बिरला। जब भी कोई मूवमेंट करने के लिए गांधी जाते थे, बिरला साहब को कहते थे मेरे को इतना 50,000 रुपया भेज दो, मेरे को 60,000 रुपया भेज दो। इसलिए देखिए जीडी बिरला के खिलाफ अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल में मूवमेंट किया, लेकिन जीडी बिरला का खिलाफ कलकत्ता जूट मिल में कभी मूवमेंट नहीं किया गांधी जी ने, क्योंकि गांधी को पता था जीडी बिरला इज वन हु इज हेल्पिंग। जमनालाल बजाज, आपने सेवाग्राम देखा होगा, सेवाग्राम पूरा जो प्रॉपर्टी, पूरा जो जमीन जमनालाल बजाज ने दिया। जमनालाल बजाज गांधी जी के साथ रहते थे, क्योंकि गांधी जी का ये बिलीफ था कि ये जो अमीर लोग ट्रस्टीशिप जो आइडिया अगर ठीक से माने, ये भी जॉन रस्किन का आइडिया था, तो शायद हिंदुस्तान में आगे तरक्की होगा। आपको पता है, देखिए पुराना जमाना में 1793 परमानेंट सेटलमेंट से पहले का बंगाल का गांव देख लीजिए, और 1793 परमानेंट सेटलमेंट का बाद बंगाल का गांव देख लीजिए, दोनों में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जमींदार लोग एक्सप्लॉइटर नहीं होते थे, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता था। मतलब मेरा घर में मेरा बच्चे को पढ़ाना है, पैसा नहीं है, जमींदार पैसा देते थे। मेरा घर में बीमार माताजी है, बीमार माताजी को दिखाने के लिए, डॉक्टर देखभाल करने के लिए सब कुछ पैसा जमींदार करते थे। लेकिन 1793 के बाद जब जमीन का दाम हो गया, सनसेट लॉ आ गया, एक साल बाद आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, तब सब जमींदार कलकत्ता चले गए, और गांव में कौन रह गया, जिसको कहते हैं सेकंड मिडिल मैन। ये मिडिल मैन बहुत अत्याचार करते थे, इसीलिए देखिए गांव का जो गरीब लोग बहुत खपा हो गए अगेंस्ट द जमींदार्स। तो ट्रस्टीशिप आइडिया, देखिए गांधी जी का जो आइडिया लिया था, ये लिया था हिंदुस्तानी दिमाग से। 1793 पहले भी इस तरह था, और उसके बाद जॉन डी रस्किन। देन डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि गांधी जी का विलेज स्वराज आइडिया जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग हुआ था, नोबडी पेड इन अटेंशन। उसका कृष्णमाचार्य कहा, भाई मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया टू हियर सितार, वीणा, बट यहाँ पे क्या सुना, इंग्लिश बैंड। ये कृष्णमाचार्य का स्टेटमेंट है, व्हाट आई हियर इज इंग्लिश बैंड बट नॉट सितार एंड वीणा। ये देखिए, ये आइडिया में एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है, इसके पीछे यही है कि हिंदुस्तानियों को आइडिया कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है अंबेडकर साहब एंड नेहरू जी इतना इन्फ्लुएंस थे विद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, विद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कि इससे बाहर ये लोग जा नहीं पाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के 80% प्रोविजंस अगर आप चेक करके दिखाएंगे, मैं आपको बता सकता हूं, जो 1935 एक्ट से लिया गया। तो उसका मतलब वीणा सितार चलेगी, निकाल दिया गया।
फिर उसके जगह में आ गया इंग्लिश बैन। ये तो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में देखिए 1992 में 73rd अमेंडमेंट से पहले कहीं जिक्र नहीं किया। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रखा गया, लेकिन वो था नॉन जस्टिसिएबल। तो गांधी जी का डिसेंट्रलाइजेशन आइडिया देखिए, आज वी आर रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो राम राज्य का आइडिया बताया, इसमें गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन वाला बात बार बार जिक्र किया। देन स्वदेशी, स्वदेशी इज समथिंग जो आज चल रहा है, थिंक लोकल एंड ग्लोकल, जो आइडिया ऑफ ग्लोकल, ये आइडिया वही है, वही आइडिया वापस आ रहा है। ये सबके आप पहले देखते थे, हमने विदेश से कोई सामान आता था, वी आर वेरी हैप्पी जब हमारे पास इंग्लैंड का पार्कर पेन है। ये आजकल देखिए सबके में एक जागरूकता आ गई, जे वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। ये स्वदेशी के जो आइडिया, ये मानसिकता, माइंडसेट का बात कर रहे हैं। पढ़ाई के बारे में देखिए, हम लोग कहते हैं भाई इंग्लैंड अगर नहीं जाओगे तो पढ़ाई कैसे होगा। आजकल हम ये नहीं सोच रहा है। तो देखिए गांधी जी कितना फोरसाइट था उस जमाने में इन टर्म्स ऑफ conceptualizing an utopian idea. Ram Rajya actually talked about things which we don't believe even today. Swadeshi. And then finally ये नए तालीम, गांधी का नए तालीम। ना नए तालीम के साथ I'm very emotionally attached with this idea simply because जब मैंने विश्व भारती जाने से पहले गांधी जी was my hero। वो अभी भी है, बट ज्यादा अट्रैक्टिव हीरो बन गए रविंद्रनाथ टैगोर। बिकॉज गांधी जी से पहले बहुत कुछ आइडिया रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचा था, जो गांधी जी बात, नया तालीम वही इज वन ऑफ देम। अगर गांधी जी का, टैगोर का तपोवन शिक्षा, ये आइडिया अगर देखा जाए और नए तालीम देखा जाए, जो 40s का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, और टैगोर का तपोवन शिक्षा 1888 का, जब पहले ब्रह्म विद्यालय बनाया गया शांति निकेतन में, तो वही आइडिया नया तालीम में आ गया। जे अपना लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, अपना देश को समझना पड़ेगा, अपना जबान से बात करना पड़ेगा। मतलब you don't be one who needs to be understood from other criteria। ये जो बात है नया तालीम का, जो डिस्कस मेरे हिसाब से, forget about course structure, forget about the way Naya Talim is expressed, but the basic जो foundational idea happens to be the realization of yourself as you। ये करना पड़ेगा। तो just I'll just take 1 minute। So देखिए मैं briefly, because सर का इत्तेला आ गया, तो अभी खत्म करना, मैं जस्ट खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए राम राज्य के बारे में हम लोग जितना चर्चा करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो असली अर्थ अभी तक हमारा दिमाग में, मतलब हमारा समझ में नहीं आया, सिंपली बिकॉज इट्स ए कॉन्सेप्चुअलाइजेशन व्हिच इज वन कॉन्टेक्चुअल, टू डिपेंडेंट ऑन हाउ यू कंसीव ह्यूमैनिटी। तो इसीलिए जो पहले शेर मैंने कहा, जब पुजारी को मंदिर में रहीम नजर आएगा, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आएगा, दुनिया का सूरत बदल जाएगी जब इंसान में इंसान को इंसान नजर आएगा। धन्यवाद। सर हिंदी में ठीक ठाक बोला? You have in fact covered the entire ground and made us understand these things thoroughly. Thank you very much, sir. Very, very grateful to you. I must request Acharya ji, I think Acharya Nand Kishore Acharya ji, to please come. अध्यक्ष जी और मित्रों, बहुत सारी बातें प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कही हैं और उठाई हैं, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के साथ में सब चीज को जोड़ के देखना है।
तो मैं उस एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं जो गांधी जी अक्सर करते थे। ठीक ठीक परिभाषा नहीं कर पाएंगे। तो शब्द है स्वराज। महात्मा गांधी इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी वो स्वराज कहते हैं, कभी वो राम राज्य कहते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि गांधी जी की दृष्टि में इन दोनों में कोई भेद नहीं है। स्वराज भी उनका आदर्श है और राम राज्य भी उनका आदर्श है। तो स्वराज से उनका क्या तात्पर्य है, और फिर हम देखते हैं कि क्या वही बातें वो राम राज्य पे लागू करते हैं। पर उससे पहले क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है, तो ये देख लेना कि जरूरी है कि फ्रीडम से उनका क्या आशय है। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं तो सामान्य तब मानते हैं कि अंग्रेजों के शासन की समाप्ति, भारत की संसदीय लोकतंत्र की स्थापना, ये फ्रीडम स्ट्रगल मानी जाती है। गांधी जी 1909 में जब हिंद स्वराज लिखते हैं तो उसमें फ्रीडम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, स्वराज का ये कॉन्सेप्ट नहीं, जिसे हम केवल विदेशी शासन की समाप्ति मानते हैं, वो उनका अवधारणा नहीं है। और इस बात को उन्होंने 1921 में जब एक नया एडिशन निकला हिंद स्वराज का, तो उसकी एक भूमिका अलग से लिखी उन्होंने, और उस भूमिका में उन्होंने ये बात कही कि अभी जो संघर्ष हम अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे हैं उसका उद्देश्य तो विदेशी शासन की समाप्ति और संसदीय लोकतंत्र की स्थापना है, अभी जो संघर्ष कर रहे हैं उसका। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो है उस स्वराज को पाना जिसका जिक्र मैंने हिंद स्वराज में किया है। यानी एक प्रकार से जो भारतवर्ष की आजादी थी, अंग्रेजी शासन की समाप्ति थी, वो उनके लिए एक स्टेप था, एक पड़ाव था, जिसके माध्यम से आगे वो उस स्वराज की तरफ देश जा सकता था जिसकी कल्पना वो करते थे। इसी संदर्भ में वो राम राज्य शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इस स्वराज के बारे में आप देखिए, एक बड़ी विचित्र बात यह है कि अगर संसदीय लोकतंत्र की स्थापना ही स्वराज है, पर गांधी तो राज्य को ही हिंसा का रूप मानते हैं। वो बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि राज्य संकेंद्रित और संगठित हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य संस्था, चाहे वो राज्य कोई भी हो, विदेशी हो कि देशी हो, राज्य संस्था ही जो है वो संगठित और संकेंद्रित, कंसंट्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेटेड ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। अगर राज्य है तो वो ये होगा, क्योंकि उसका सारी ताकत जो हिंसा पर टिकी हुई, उसकी जो संप्रभुता है उसका आधार हिंसा है, और हिंसा गांधी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो इसलिए जिस स्वराज की कल्पना वो करते हैं वो ये राज्य नहीं है जिसकी स्थापना आजादी के बाद हुई, हम लोग रह रहे हैं। वो एक पड़ाव तो मानते हैं उसको वो, लेकिन उसको लक्ष्य की तरह से स्वीकार नहीं करते। और इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं, और स्वराज शब्द की एक व्याख्या करते हैं। जिस स्वराज की बात वो कर रहे हैं उसकी भी एक व्याख्या उन्होंने की है, और उसकी व्याख्या में वो कहते हैं कि स्वराज का अर्थ है सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने का सतत प्रयास। और आगे उसको क्वालिफाई करते हैं, चाहे वह सरकार देशी हो या विदेशी। यानी ये नहीं कि विदेशी सरकार की नियंत्रण से मुक्त हुआ और देशी सरकार की नियंत्रण से मुक्त नहीं होगा। तो स्वराज शब्द का अर्थ उनके लिए है किसी भी प्रकार की सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होने का निरंतर प्रयास करना, चाहे वो सत्ता विदेशी हो या चाहे वो देशी। तो आप देखिए और संसद के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ब्रिटिश संसद के हवाले से वो हम सब लोग जानते हैं। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो जो कल्पना स्वतंत्रता की है, जो आशय स्वतंत्रता का है उनका, वो ये नहीं है जिसे हम सामान्यतः स्वतंत्रता मान लेते हैं। और वो है, अभी हम स्वतंत्र हम कह सकते हैं, पर क्या वाकई है? क्योंकि क्या हम उन सभी प्रकार के नियंत्रणों से मुक्त हैं? तो गांधी जी की दृष्टि में वो स्वराज नहीं है अभी। वो राजनीतिक स्वतंत्रता है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं इसको। तो लेकिन जो कल्पना गांधी करते हैं, जो अवधारणा उनकी है, वो वहां पर हमको पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती। और क्योंकि उनके हिसाब से राज्य की जो अवधारणा है उसी में निरंकुशता सीमित अंतर्निहित है।
यानी जब तक राज्य रहेगा तब तक कोई किसी प्रकार की निरंकुशता रहेगी। तब स्वराज की एक और व्याख्या वो करते हैं, लोग उसको मानते हैं कि वो स्वराज शब्द जो है वो राम राज्य तो ठीक है, रामायण से दिया गया शब्द है, लेकिन स्वराज शब्द को कहते हैं एक वैदिक प्रत्यय है। स्वराज के बारे में स्पष्ट कहा कि एक वैदिक शब्द है, और वैदिक शब्द का वहां अर्थ भी उन्होंने ये बताया, जो उनका अपनी व्याख्या हो सकती है, पर वो व्याख्या करते हुए ये कहते हैं कि स्वराज शब्द का मतलब होता है आत्मनिग्रह, स्वयं पर अपना स्वयं का शासन, अपने मन पर अपना राज्य। अपने मन का राज्य नहीं, कुछ अनुवादों में उसको अपने मन का राज्य लिखा गया, पर वो एक्चुअली अपने मन का राज्य में तो निरंकुशता हो सकती है, अराजकता भी हो सकती है, पर गांधी इसको मन का राज्य नहीं कहते, अपने मन पर अपना राज्य, ये उनकी दृष्टि में स्वराज है। और इसको एक वैदिक उल्लेख मिलता है। और मैं ये भी सूचना के बदौर कर दूं आपको कि ये जो स्वराज का की अवधारणा है, ये कोई केवल कल्पना नहीं है, केवल यूटोपिया नहीं, क्योंकि हमें बौद्ध साहित्य में, स्वयं शतपथ ब्राह्मण में और अन्य कई जगहों पर ऐसे इलाकों का उल्लेख मिलता है जहां स्वराज व्यवस्था थी। अगर आप देखेंगे जैन साहित्य में मिलता है, और जैन मुनियों से कहा गया कि उधर से होकर न जाएं, क्योंकि आप जब जाएंगे तो वो लोग आपको जासूस वगैरह समझ सकते हैं, गुप्तचर समझ सकते हैं। यानी इसका अर्थ है कि कुछ इलाके ऐसे थे जहां ये स्वराज की व्यवस्था व्यवहार्य थी, चल गए। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लेकिन गांधी जी ने शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी हमारे यहाँ पर हम देखते हैं। स्वराज का एक आंदोलन चल रहा 1905 से ही, प्रसिद्ध वाक्य तिलक का तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उससे पहले भी और बंग भंग के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसी में स्वदेशी और स्वराज की कल्पनाएं, अवधारणाएं बनी। ऋषि पॉल ने, बिपिन चंद्र पॉल ने 1906 में मद्रास में एक व्याख्यान दिया था, 3 लेक्चर्स थे वो, और जो उसी साल यानी गांधी जी के हिंद स्वराज के लिखे जाने से 3 वर्ष पूर्व वो पुस्तक छप गई। उसका नाम था स्वदेशी एंड स्वराज, और मुझे उसका हिंदी अनुवाद करने का सौभाग्य मिला है। तो मतलब वो शब्द वहां से चल रहा था। स्वामी दयानंद ने भी स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया, पर वो राजनीतिक स्वतंत्रता का ही अर्थ होता है। गांधी जी के लिए स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, उनके लिए है व्यक्ति मात्र की स्वतंत्रता, व्यक्ति मात्र अपनी सत्ता में रहे, ऐसी व्यवस्था हो, वो उनके लिए स्वराज। श्री अरविंद इसको एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि ये आत्मानुशासित आत्म स्वातंत्र है। श्री अरविंद स्वराज शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, जब व्याख्या करते हैं वो डेमोक्रेसी की, तो लिखते हैं कि आत्मानुशासित आत्म स्वातंत्र। ये तो गांधी जी स्वराज की कल्पना करते हैं, और श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं वो यहाँ लगभग समान अर्थों की तरफ हमको ले जाते हैं। अब ये आप ये देखेंगे कि जिसे आत्मानुशासित स्वातंत्र कहा जाता है, उसके लिए कुछ आदमी में योग्यताएं चाहिए होती हैं। तो मैं ये तो मान लेता हूं कि गांधी जी, मैं स्मार्ट शब्द इस्तेमाल नहीं करता, से हो गए, तो मैं उस शब्द से बचता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि गांधी जी राजनीतिक तो ठीक थे, उनका काम वही काम कर रहे थे, पर केवल राजनीतिक ही नहीं, राजनीतिक के अलावा भी कुछ और बहुत कुछ थे। राजनीति उनका कर्म क्षेत्र था मुख्य, क्योंकि वो समय की डिमांड थी, पर वो केवल राजनीति के नहीं थे, क्योंकि राजनीतिज्ञ होते या राजनीति उनका क्षेत्र होती तो फिर वो भी सत्ता में आने की कोशिश करते, जैसे बाकी सब राजनीतिज्ञ करते, सत्ता की लड़ाई लड़ते, आज भी लड़ते, तब भी लड़ते थे। लेकिन गांधी सोच भी नहीं सकता था कोई हिंदुस्तान आजाद होगा तो गांधी राष्ट्रपति होंगे, गांधी प्रधानमंत्री होंगे, नोबडी कुड थिंक ऑफ। इसका तात्पर्य यह है कि एक जनमानस में बाबा शब्द भी मैं गलत मानता हूँ, बाबा बात करते हैं, वो निश्चित रूप से एक नैतिक सत्ता की बात कर रहे हैं। तो राजनीति को एक नैतिक आधार पर ले जाने की कोशिश करना, अगर वो कुछ धार्मिकता है तो है, अगर वो बाबा पर है तो है,
पर राजनीति नैतिक न होने के क्या परिणाम हो सकते हैं ये हम सब लोग भुगतते हैं, आज भी भुगत रहे और पहले भी भुगत रहे थे। तो इसलिए राजनीति को एक वास्तविक नैतिक आधार मिले, राजनीतिक कर्म को भी और हमारे उद्देश्यों को भी, इसकी कोशिश वो करते हैं। अब आप चाहे तो इसको धर्म कह लें, चाहे तो इसको अध्यात्म कह लें, चाहे तो इसको राजनीति कह लें, लेकिन मुख्य बात सिर्फ ये है कि वो राजनीति उस तरह की राजनीति सत्ता का खेल नहीं, और केवल मैंने आपसे कहा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भी नहीं, वो स्वयं राजनीति को एक उच्च स्तर पर ले जाने की बात है, स्वयं राजनीति को एक आध्यात्मिक स्तर देने की बात है, वो गांधी करते। अब आप चाहे तो महात्मा कहे, चाहे तो क्या फर्क पड़ता है गांधी जी को क्या कहते हैं, लेकिन मुख्य बात उनको समझने। तो मैंने कहा अब दूसरा शब्द वो इस्तेमाल करते हैं राम राज्य को। अब राम राज्य शब्द से कुछ लोगों ने आरोप लगाया उनके ऊपर कि आप ये धार्मिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसमें थोड़ा धूमिलता है, ऑब्सक्यूरेंटिज्म है, तो सब अज्ञेयवाद है, तो समझ में नहीं आता कि क्या अर्थ है इसका, तो इसको बताइए। तो वो बड़े स्पष्ट शब्दों में जो उन्होंने कहा है वो मैं कहता हूँ। पहली बात तो राम राज्य शब्द से ये धारणा बन सकती थी कि राम क्योंकि हिंदुओं के परम पूज्य अवतार है, तो इसलिए वो किसी ऐसे हिंदू राज की बात कर रहे हैं, जो धारणा हो सकती थी किसी और ग्रुप की, पर ऐसा लोग सोच सकते हैं। तो गांधी जी इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, और वो कोट कर देता उनका कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज नहीं है, राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज नहीं है, मेरा तात्पर्य ईश्वर के राज्य से, जिसका जिक्र चक्रवर्ती जी ने भी किया। मेरा तात्पर्य ईश्वर के राज्य से, मेरे लिए राम और रहीम एक ही है, मैं सत्य और न्याय के ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानता। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि सत्य और न्याय का राज्य राम राज्य। धर्म की बात नहीं करें कि धर्म का राज्य। और जहां तक संप्रदाय के धर्म का सवाल है, देखिए संप्रदाय तो बुरा शब्द नहीं है, हो गया है बुरा। संप्रदाय का तात्पर्य है कि जो आपको मिला है सम्यक रूप से प्रदत्त हुआ है, वो संप्रदाय है। एक जिसे आप स्कूल कहते हैं आजकल, फिलोसफी के स्कूल जैसे होते हैं, तो एक तरह का स्कूल है, लेकिन अब उसके अर्थ हो गए सांप्रदायिकता हो गई। जैसे राष्ट्रीयता बहुत अच्छी चीज, राष्ट्रवाद की पता नहीं क्या क्या अर्थ हो गए, सो भी चर्चा हो रही थी। तो एक प्रकार से भी कह सकते हैं कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके धीमे 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 वो अर्थ क्षीण हो जाते हैं, हम उनके वास्तविक अर्थों को भूल जाते हैं। जैसे धर्म शब्द खुद ही हो गए, तो उससे बचते हैं। तो अब महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि मैं सत्य और न्याय के ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानता, और साथ ही ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि राम और रहीम मेरे लिए एक ही है। जो बात शेर के हवाले से आपने कही, वो कह रहे गांधी मेरे लिए दोनों एक ही, और राम और रहीम भी उनके लिए कोई ऐतिहासिक या पौराणिक अस्तित्व की तरह नहीं मान रहे, उसको वास्तविक तथ्यात्मक अस्तित्व नहीं मानते। और इसीलिए वो साफ कह देते हैं कि मैं किसी ऐतिहासिक राम की या पौराणिक राम की बात नहीं कर रहा, यानी किसी दाशरथी राम की बात नहीं कर रहा कि जो एक अयोध्या के राजा थे। तो ठीक है, वो एक कहानी में या कोई भी होंगे, पर मेरे लिए तात्पर्य वो नहीं है। ये बड़े बार बार इस बात को स्पष्ट किया कई जगहों। और साथ में ये भी कहा है कि जब तक सभी धर्मों का सम्मान नहीं होता है, तब तक राम राज्य संभव नहीं। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू राज नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जब तक सभी धर्मों का सम्मान नहीं होता है, तब तक वो राम राज्य नहीं है। इस बात को बहुत स्पष्ट। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसका जिक्र चक्रवर्ती जी ने थोड़ा किया था, और वो ये कि जब तक किसी भी प्रकार की विषमता समाज में है, तब तक हम राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। आर्थिक विषमता भी, सामाजिक विषमता भी, और आर्थिक विषमता के बारे में तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि जहां कुछ लोग समृद्धि के उसमें झूम रहे हैं और अधिकांश लोगों को खाना भी पूरा नहीं मिलता है, वहां कैसे राम राज्य हो सकता है? ऐसी विषमता के रहते हुए
किसी प्रकार का राम राज्य संभव नहीं है। तो ये एक प्रकार से आप समझ सकते हो। एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जब तक आपके मन में हिंसा है तब तक राम राज्य संभव है। जब समाज के मन से हिंसा मिट जाती है तभी राम राज्य संभव है। जब तक हिंसा का भाव मन में रहता है, उसको पाल संभव नहीं हो सकता। अब आप कैसे भी, तो असंभव चीज है। हिंसा तो होती है, मनुष्य के मन में आती है। इसकी एक बड़ी दूसरे प्रकार की स्टडी का सवाल है, लेकिन हिंसा मनुष्य का अंतर्जात इनेट नेचर नहीं है, तो ये समझना चाहिए। मनोविज्ञान ने और तंत्रिका विज्ञान ने दोनों ने लगभग बहुत काम किया इसके ऊपर, और मेथोडोलॉजी ने और साइकोलॉजी ने, और उनकी ये धारणा है कि मनुष्य में हिंसक होने का सामर्थ्य तो है, परिस्थिति बस वो हिंसक हो सकता है, उत्तेजना की वजह से हो सकता है, लेकिन हिंसा उसका इनेट नेचर नहीं, अंतर्जात स्वभाव नहीं है। हमें हिंसा दिखाई दे रही है कुछ बाह्य परिस्थितियों की, ऐतिहासिक परिस्थितियों की और इन सब कारणों से पैदा होती है, लेकिन मनुष्य के अपने अंदर में वो चीज है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब कुछ अर्सा पहले जब डार्विन का इस सिद्धांत का सोशल डार्विनिज्म के नाम से चला, वो सामाजिक डार्विनवाद, डार्विन का खुद का प्रतिनिधि नहीं था। उन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमने मान लिया सर्वाइवल ऑफ द ताकतवर, स्ट्रॉन्गेस्ट। वो फिटेस्ट कह रहे हैं, जो प्रकृति के अधिक अनुकूल हो सकता है उसकी बात कर, वो ये नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही रॉबर्ट स्पेंसर वगैरह सब लोगों ने ये कहा कि ये तो फिर, और ये आप देखें कि जितना राष्ट्रवाद पहले महायुद्ध के समय डेवलप हुआ था, और पहले महायुद्ध के कारणों में एक मनोवैज्ञानिक कारण ये माना जाता है कि एक धारणा बन गई थी समाज में कि जो ताकतवर है वो बचेगा, तो इसलिए हर राष्ट्र को उतना ही ताकतवर बनेगा। आज भी है, बहुत से लोगों की धारणा ऐसी, पर ये डार्विन का मंतव्य नहीं था। तो डार्विन ने स्वयं डिसेंट ऑफ मैन में लिखा कि मनुष्य जीवन के मनुष्य रूप में अवतरित होते ही सामाजिकता और नैतिकता के सवाल खड़े होते हैं। यानी वो एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में भी ये सवाल अपने आप आते हैं। और प्रोपॉटकिन ने एक किताब उसी जमाने में लिखी, डार्विन के कुछ अर्से बाद, डिसेंट ऑफ मैन के बाद में, और उन्होंने उसमें अपनी किताब में डार्विन का हवाला भी दिया है। वो किताब थी कोऑपरेशन ए फैक्टर इन इवोल्यूशन। कोऑपरेशन जो है वो इवोल्यूशन के जैविक विकास में एक फैक्टर है। और सिद्ध क्या है? कोऑपरेशन एनिमल लाइफ, फिर कोऑपरेशन इन ह्यूमन लाइफ। 4-5 चैप्टर है उसमें, 2 चैप्टर एनिमल लाइफ के बारे में, 2 चैप्टर ह्यूमन लाइफ के। और वो बहुत ही ठीक तरीके से इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कोऑपरेशन जरूरी है मनुष्य के विकास के लिए, जीवन के विकास के लिए। उसी से विकास हुआ, हिंसा से नहीं हुआ। तो इसलिए वो ये मानना कि नहीं हिंसा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, ये भी एक धारणा बना दी गई है, भ्रम जो मिथ बन जाते हैं उसमें से भी बन गए। पर गांधी इस बात को समझते हैं कि इसलिए केवल ये यूटोपिया नहीं है। यद्यपि ये ठीक है कि हम उसको पूरा प्राप्त न कर सके, लेकिन अगर दिशा वही है तो जितनी दूर हम उस दिशा में जा सके उतनी ही दूर तक समाज राम राज्य के लक्ष्य को हासिल कर पाए। अब देखिए तुलसीदास क्या कहते हैं राम राज्य के बारे में। शब्द तो वहीं से लिया, रामायण से। तुलसीदास के रामचरितमानस की वो रामायण बोलते हैं। अब तुलसीदास की जो यहाँ करते हैं व्याख्या हो, जो लिखते हैं राम राज्य के बारे में, बहुत छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ उसका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा। राम राज्य वो राज्य है जिसमें दैहिक दैविक और भौतिक ताप, अन्याय, असंतोष, बेचैनी न रहे, किसी को भी न व्यापे, तब राम राज्य। और फिर आगे कहते हैं सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी लोग आपस में एक दूसरे के प्रति प्रीति का व्यवहार रखें। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म नृत्य श्रुत नीति, यही श्रुति की नीति है और यही मनुष्य का स्वधर्म है। अब व्याख्या में स्वधर्म का मतलब आप हिंदू धर्म कर दो, इस्लाम कर दो, पर यहाँ स्वधर्म की तात्पर्य वो नहीं है, क्योंकि परस्पर प्रीति की बात कर रहे हैं। सब नर आपस में परस्पर प्रीति से, तो ये जो पारस्परिकता है और ये पारस्परिक जो न्याय है,
ये महात्मा गांधी के राम राज्य की तलाश है। अब अगर हम ये मान लें कि न्याय तो संभव नहीं है, समाज में व्यवहार ही नहीं है, यूटोपिया है, तब तो कोई अर्थ नहीं रहेगा हमारे कुछ भी करने। जितना हमें बढ़ सकते हैं आगे उस दिशा के अंदर, जितनी दूर तक जा सकते हैं, वो 2 दिन में तो होता नहीं। देखना सिर्फ ये है कि क्या जो कुछ ये हो रहा है वो उस दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम उसके बाद उस दिशा में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। ये बात ठीक है इन्होंने कि जब संविधान बना तो उसमें कोई उल्लेख ही नहीं था, बल्कि नीति निर्देशक तत्वों में भी जो उल्लेख किया वो बाद में जोड़ा गया। जब बन गया लगभग संविधान सारा, तो 2-3 लोगों का अचानक ख्याल आया कि इसमें गांधी जी का तो कोई दिखता ही नहीं है संविधान। जब नहीं दिखता है तो राजेंद्र बाबू के पास गए लोग, ये जयप्रकाश नारायण ने लिखा है अपने, उनके पास गए लोग और कहा कि इस पर कुछ नहीं दिख रहा है गांधी जी। फिर उन्होंने कहा वो संविधान तो बन चुका था लगभग, दोबारा से तो कुछ हो नहीं सकता था। तो फिर ये तय पाया गया, जवाहरलाल के पास भी गए, फिर ये तय पाया गया कि एक दफा ये जो ग्राम स्वराज्य की धारणा है इसको हम डायरेक्टिव पॉलिसीज में देते हैं ताकि बाद में हम इसको देखें। अब आप जानते बाद में पॉलिटिक्स में देखा नहीं जाता। आज भी आप ये देखेंगे कि जो कुछ ये ग्राम स्वराज की धारणा के आधार पर जो कुछ किया गया है, जो विकेंद्रीकरण राजनीति, क्या वो है ग्राम स्वराज? संविधान में भी सब चेंज हुआ, उसके कारण से हो गया, लेकिन आज भी जो गांधी जिस ग्राम पंचायत की बात करते हो तो वो नहीं है। तो वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर कोई राज्य का नियंत्रण नहीं है। आज तो वो राज्य की एजेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट की हो गया सब। 3-4 मिनट लूंगा मैं, फिर इतना तो 2-4 बातें और कहनी जरूरी है। इसलिए वो ग्राम स्वराज नहीं है दरअसल, वो केवल एक हम कह सकते हैं औपचारिक रूप है जिसमें हम संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, गांधी जी का विकेंद्रीकरण इसमें। एक बात ट्रस्टीशिप के बारे में भी कही जो जरूरी चीज है आर्थिक विषमता को मिटाने के तौर पर। मैं थोड़ा चक्रवर्ती से इस बारे में असहमत होता हूँ, क्योंकि जब गांधी जी बात करते हैं ट्रस्टीशिप की तो उस समय वो आप देखिए उसको 3 स्तरों पर लेते हैं आर्थिक व्यवस्था प्रोडक्शन। एक है वो प्रोडक्शन जो गांव में स्वदेशी टेक्नोलॉजी के आधार पर होता है, और स्वदेशी का तात्पर्य वो नहीं है जो आज हम लेते हैं कि हिंदुस्तान में बना हुआ माल स्वदेशी। स्वदेशी का तात्पर्य गांधी के लिए स्थानीय आवश्यकताओं की स्थानीय संसाधनों से पूर्ति। स्थानीय जितनी जरूरतें हैं वो जहां तक संभव तो हमेशा जरूरतें उनको स्थानीय संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए, तब वो स्वदेशी। उसकी टेक्नोलॉजी स्थानीय हो, संसाधन दूसरे जो इस्तेमाल आप करते हैं कच्चा माल वो स्थानीय हो और स्थानीय जरूरतों के मुताबिक हो, वो स्वदेशी है। वरना फिर वही बातें जो उन्होंने हिंद स्वराज में लिखी थी कि आप अंग्रेजी बाग को हटा करके खुद बाग हो जाना चाहते। दूसरा स्तर, एक तो स्तर वो है, दूसरा स्तर है मिडिल स्तर, और तीसरा स्तर है बहुत ऊंचा जो बहुत बड़े पैमाने का, जो बड़े पैमाने के उत्पादन के पक्ष में देखिए कुछ चीजें जरूरी हो गई थी। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहां हजारों मजदूर एक साथ काम करते हैं वहां पर मैं चाहता हूं वो सीधे राज्य के नियंत्रण में रहे। वहां वो टाटा बिरला के उनके नियंत्रण में रहने की बात नहीं करते, वो सीधे राज्य के नियंत्रण में रहने चाहिए, और उनका उसके लिए मुआवजा दिया जाए या न दिया जाए ये भी तय किया जाना चाहिए। अलग अलग केस में अलग अलग क्या परिस्थिति है। अब जो मिडिल उस समय हिंदुस्तान में जो थे ये सब मिडिल साइज इंडस्ट्रीज थी, तो जो मिडिल साइज इंडस्ट्रीज है उसके लिए ट्रस्टीशिप की बात है। और ट्रस्टीशिप के बारे में भी ये नहीं है जो अमीरों के प्रति को इसमें सहानुभूति, चाहे वो पैसा वैसा देते होंगे, अमीर उनको दिया भी था, लेकिन फिर भी वहां कोई सहानुभूति नहीं है। वो स्पष्ट कहते हैं कि इसमें पहली बात तो ये कि उसका बेटा ट्रस्टी आवश्यक रूप से बने जरूरी नहीं, वो अगर योग्य है आप बाकी लोगों को लगता है वो। और दूसरी बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि राज्य को इसके बारे में कानून बना करके लागू करना चाहिए। एक किशोरलाल मसरूवाला ने, एक एमएल दाते वाला ने वो बनाया था
वो किशोरलाल बसुवाड़ा के माध्यम से वो सूत्र गांधी जी तक गया। गांधी जी ने उसको देख करके थोड़ा संशोधन उसमें किया और उसको अनुमति दी, अप्रूव किया, वो छपा भी बात। तो उसमें वो बड़े स्पष्ट कहते हैं, 6 सूत्र है उसमें। कोई प्रोडक्शन समाज की स्वास्थ्य के विरोध में नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई प्रोडक्शन न किया जाए। कोई प्रोडक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे असमानता बढ़े समाज में, उच्चतम आय और निम्नतम आय के बीच में अधिक से अधिक 1 और 10 का फर्क हो, प्रैक्टिकली इससे अधिक फर्क नहीं होना चाहिए। फिर इसमें एक कहते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है उनकी, वो अगर वो उसके बाद में योग्य साबित नहीं होते हैं तो वो कंफिस्केट करके कर दिया जाए, उसको राज्य शासन कर ले और राज्य उसके बारे में कानून बनाकर उस पर लागू करे। तो ये अगर नहीं मानते हैं, आज भी नहीं मानते, और एक बिल बाद में रोजिया रखना चाहते थे जिसके बारे में पार्लियामेंट में, जो कि डेथ हो गई, उनके तो रह नहीं पाया। बहुत सी बातें हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा, और सत्य का तात्पर्य है किसी भी तरह के अन्याय का विरोध, जो गांधी जी उन पर विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने किया, चाहे राजनीतिक रूप में किया हो, चाहे किसी नैतिक उस अर्थ में किया हो, पर किया। और इसलिए उस सत्य की प्रतिष्ठा ही रामराज्य है। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या हम स्वयं उसके लिए तत्पर हैं कि नहीं। नमस्कार। These are two complementary courses, and both have enriched each other. I will now request DC, please. वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। परमादरणीय गुरुवर प्रोफेसर कपिल कपूर जी, प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती जी, प्रोफेसर किशोर आचार्य जी, और सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, आप सबको नमस्कार। मैं बहुत सारी बातें गांधी जी को लेकर के और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में की जा चुकी हैं, और उसमें कुछ अतिरिक्त मेरे पास ऐसे भी नहीं है, तो समय भी काफ़ी अभाव है। 10 मिनट में मैं अपनी बात, अच्छा ठीक है। तो मैं एक दूसरे पक्ष की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, और चूंकि ये सारी चर्चा वाल्मीकि रामायण से शुरू होती है, राम और राम राज्य। पहले मैंने सोचा था कि राम का राज्य और राम राज्य, इसमें थोड़ा अंतर करना, क्योंकि वो एक आजकल के समय में एक मेटाफर बन चुका है इस तरह का। तो वाल्मीकि के समय से ये चर्चा शुरू होती है राम राज्य की, और कई चरणों में यह अधिकाधिक अर्थ, या अर्थ का एक प्रकार से कहें तो जो अर्थ की गति होती है, अर्थात्कर्ष, अर्थ व्याप्ति आदि, ये सब चरणों से यह शब्द या यह उदाहरण गुजरती है। मैं एक वैदिक ऋचा उद्धृत करना चाहता हूँ आपके सम्मुख। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। ये पंक्ति तो वैसे जो सृष्टा है इस जगत का, उसके लिए है कि ये देवता का काव्य है। यह जो सृष्टि है वह देवता का काव्य है, जो न कभी पुरानी पड़ती है और न कहीं इसकी मृत्यु होती है, ये सदा बना है। शायद यही बात हम किसी अच्छी कविता के लिए भी कह सकते हैं। ये कविता का निकष भी, अच्छी कविता न तो कभी पुरानी पड़ती है और न ही उसका नाश होता है, क्षरण होता है। और रामायण महाभारत से बड़ा प्रमाण इसका और क्या हो सकता है, जिसके लिए बालकांड में आप जानते हैं स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरिताश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु कर्तव्यश्यते। तो जब तक पर्वत अपनी जगह पर हैं, नदियां प्रवाहित हो रही हैं, तब तक यह राम कथा जो रामायण में वर्णित है वो विद्यमान रहेगी। और आज भी वह प्रमाणित होती है कि इतनी चर्चा हम
राम के पक्ष, राम राज्य के संदर्भ में करते हैं। आगे चल करके स्वयं साकेत में महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बनाए सहज संभाव्य। तो इस तरह से यह हमारी संस्कृति में राम कथा और उसके साथ जो हमारी अपेक्षाएं हैं अपने वर्तमान से और अपने भविष्य से, वो हम बार बार उसका पुनराख्यान करते हैं। यह देश महाकाव्य की संस्कृति का रहा है और संभवतः किसी भी दूसरी साहित्यिक परंपरा में इतने महाकाव्य नहीं रचे गए जितने की अपनी भारतीय परंपरा में विभिन्न भाषाओं, केवल संस्कृत में ही इतने महाकाव्य रचे गए। और साथ ही रामायण और महाभारत को यदि हम सामने रखें तो शायद विश्व का कोई भी ऐसा महाकाव्य नहीं हुआ जिसकी लोक जीवन में इतनी व्याप्ति होगी जितनी कि रामायण और महाभारत की रही। और निरंतर उसको स्रोत मान करके, काव्य बीज मान करके कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। विभिन्न भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने में भी इन दो आर्ष काव्यों की बहुत बड़ी भूमिका रही। और इसी के आधार पर हम बृहत्तर भारत की कल्पना भी करते हैं, जो महाकाव्य के द्वारा निर्मित जो हमारी संस्कृति है उसके आधार पर। ये दोनों ही महाकाव्य प्रकारांत से धर्म के ही आख्यान है, धर्म की व्याख्या है। रामायण कर्तव्य के पक्ष से धर्म की व्याख्या है, उसका कथनक, और महाभारत अधिकार के पक्ष से। तो इन दो महाकवियों ने मूलतः धर्म की ही व्याख्या की है, धर्म ही मूल है दोनों के मध्य, लेकिन विविध पक्षों से इसकी व्याख्या होती रही। जैसे आप जानते हैं, रामायण त्रेता का आख्यान है और महाभारत द्वापर का। तो मैं जो इसमें बात कहना चाह रहा हूं इसके माध्यम से कि कोई भी कृति अपने देश काल की उपेक्षा करके कालजयी नहीं बनती, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण रामायण और महाभारत है। अपने युग की व्याख्या, अपने युग का महाख्यान प्रस्तुत करने की जो भूमिका इन दो बड़े कवियों ने निभाई है वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। लेकिन केवल देश काल में बंध जाने से भी कोई कृति महान नहीं होती, न कालजयी होती। फिर तो इसमें और इतिहास में भेद क्या रह गया। तो दो पक्ष हम देखते हैं। एक तो वैसे काश्मीर शैव दर्शन का शब्द है विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण। तो विश्वमयता भी हो उसमें, अपने देश काल में उसकी व्याप्ति भी हो, लेकिन उसको उत्तीर्ण कर सके, उसके बियॉन्ड जा सके, उसको ट्रांसेंड कर सके, ऐसे उसमें वैल्यूज, उसमें ऐसी सनातनता विद्यमान रहे। तो इसलिए इन महाकाव्यों के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। मैं जिन ग्रंथों से या जिन संदर्भों से लेकर के बात आपके सम्मुख कर रहा हूँ वो एक रामायण है, महाभारत, सभा पर विष्णु पर शांति पर रामचरितमानस, और कर्तात्री जी महाराज जी का एक ग्रंथ है, आप सबने शायद पढ़ा भी होगा, मार्क्सवाद एवं राम राज्य। ये क्यों बहुत उपयुक्त लगेगा, क्योंकि केवल उसमें केवल उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा नहीं की है, उन्हें भी पाश्चात्य चिंतक हैं करके देखा है, उनकी व्याख्या या उनकी समीक्षा भारतीय पक्ष से की है। एक समानांतर चिंतन उन्होंने प्रस्तुत किया है और वो पठनीय ग्रंथ है। यद्यपि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो बहुत सुनियोजित ग्रंथ नहीं है। आप जानते हैं विभिन्न चरणों में वो जेल में रहे और उसी क्रम में उनको शायद समय भी मिला ग्रंथ लिखने का, और उस क्रम में उन्होंने ये पूरा ग्रंथ संस्कृत में ही लिखा था, फिर बाद में उसका हिंदी अनुवाद गीता प्रेस से छपा हुआ है। तो यह संस्कृति धर्मप्राण संस्कृति है और धर्म की विविध व्याख्याएं हमारे यहाँ चलती हैं, लेकिन कुछ सामान्य चीजें हैं। हम जो मूल्य बोध है, मूल्य परखता है, उसी को हम शायद अपने यहाँ धर्म के रूप में ग्रहण करते रहे। 3 शब्दों से मैं समझता हूँ कि इस संस्कृति के विविध पक्षों को हम बता सकते हैं। एक तो शास्त्र, जो इसकी ज्ञान परंपरा है, आचार्य परंपरा,
दूसरा शस्त्र, जो धर्म रक्षकों की परंपरा है और संस्कृति रक्षक जो हमारे रहे हैं, सिख गुरु हों चाहे वैष्णवी अखाड़े आदि, इन सब के माध्यम से पहले। और तीसरी साधना, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उत्कर्ष। तो इन तीनों में जहाँ सामरस्य, जहाँ तीनों पर बराबर हम ध्यान देते रहे, इनमें असंतुलन ऐतिहासिक क्रम में इसका सामना करना पड़े, उन चरणों से गुजरना पड़ा। और धर्म के बारे में तो आप मनुस्मृति से जानते हैं, 10 लक्षण दोहराने की आवश्यकता नहीं है, सभी विज्ञ हैं। और साथ ही बौद्ध परंपरा में पारमिताओं की चर्चा आती है, 10 पारमिताओं की चर्चा आती है। और साथ ही जितने ग्रंथ हैं उन सब में बार बार, अभी सर ने कहा कि रामराज गांधी के चिंतन को लेकर के चाहे बहुत समृद्ध साहित्य ना हो, लेकिन धर्म को लेकर के तो निरंतर हमारे जितने भी महान रचनाएं हैं वो धर्म पर चिंतन करती हैं और उनका व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। वाल्मीकि रामायण से देखेंगे तो महर्षि वाल्मीकि की सबसे बड़े समय की है, और इसीलिए वाल्मीकि रामायण ही कहना चाहिए, वाल्मीकि जोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रामायण तो केवल वाल्मीकि की ही रचना है। बाकी जिन लोगों ने लिखा उन्होंने अलग अलग अभिधान दिए, लेकिन ये नाम ही इतना प्रचलित हुआ कि बताना चाहिए। तो वाल्मीकि की चिंता है कि वो अपने समय के लिए चिंता है और कौतूहल भी है। और वो कहते हैं जब नारद ये रामायण का आरंभ ही है, तब महर्षि नारद तब उनसे प्रश्न करते हैं और वो मतलब अपना कौतूहल व्यक्त करते हैं कि कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः आत्मवान को चित्तक्रोधो द्रुतिमान को सूयकः कस्य बिभ्रति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे एतत् इच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलम्। इसमें वाल्मीकि ने 16 गुणों की चर्चा पंक्तियों में, और वो चाहते हैं कि उनको इसका आश्वासन मिले कि उनके समय में कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके, अभी के समय में, अभी के देश काल में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसमें ये 16 गुण मूर्तिमान होते हैं, जो उनका आश्रय है। ये अब उनके अपने समय की चिंता को व्यक्त करता है और उसके उत्तर में उनको राम के बारे में नारद बताते हैं। तो इस प्रकार से और ये भी कहते हैं कि राम जो नाम है, राम इसी नाम से लोक में विख्यात है, मतलब लोक में उनकी स्वीकृति है राम की। और इसके बाद राम राज्य, वाल्मीकि ने बहुत वर्णन नहीं किया है राम राज्य का, बहुत कम वर्णन किया है, थोड़ा बालकांड में और अंत में उसमें युद्धकांड के अंत में। और वहां वो कहते हैं कि राम राज्य के प्रभाव का वो वर्णन आपके सम्मुख रखते हैं, और अभी उदाहरणों को बताने का समय नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ कोई दस्यु भय नहीं है, राम राज्य में अनर्थकारी कार्य नहीं होते, और कोई भी वृद्ध व्यक्ति अपने पुत्र का दाह संस्कार नहीं करता, अपने पुत्र का, ठीक है। तो असमय मृत्यु नहीं होती, ये बता रहे हैं। और सभी यहाँ प्रसन्न हैं, कोई किसी की हिंसा नहीं करता, परस्पर हिंसा में कोई संलग्न नहीं है। और यही नहीं, इस राम राज्य का प्रभाव केवल मानव समाज पर पड़ता हो ऐसी बात नहीं है। प्रकृति है, पशु है, पक्षी हैं, जलाशय आदि सब पर उसका प्रभाव दिखता है। ये केवल मनुष्य केंद्रित सभ्यता भी नहीं है, इसलिए जब भी ये चर्चा होती है तो पूरी प्रकृति उसके साथ ही चित्रित होती है। कि जहाँ के वृक्ष जो है नित्यमूला है, नित्यमूला मतलब उनकी जड़ें मजबूत हैं, वो अधिक काल तक रह सकती हैं, फल से लदे हुए वृक्ष आदि, इन सब चीजों की चर्चा करती हैं। और प्रजा धर्म में रखे कोई मिथ्या भाषण आदि नहीं करता। आगे चल करके फिर महाभारत में हम सभा पर्व और शांति पर सारी चर्चा देखते हैं पुनः।
और एक चर्चा भगवद गीता की बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जिस राज सत्ता में हम अपेक्षा रखते हैं कि जहाँ धर्म की उन्नति हो और जो सज्जन हैं उनको कोई कष्ट न हो और दुर्जनों का विकास न हो, ये सब कुछ एक राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए। और साथ ही यहाँ धर्मो रक्षति रक्षिता है, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। इसलिए धर्म के प्रति, और धर्म यही है हमारे लिए, मूल्यबोध है, कोई सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम नहीं। तो इन धर्मों को धारण करके हम यदि अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से वह फलदायी जीवन है। वो जैसे चरक ने कहा हित आयु और सुख आयु की बारे में चर्चा की, तो यह हित आयु है, हमारा होना, हमारा जीवन सबके लिए कल्याणकारी। विशेष करके महाभारत में अराजकता की जो चर्चा की गई है वह निश्चित रूप से विचारणीय है। और कहते हैं कि इस अराजकता की स्थिति में राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं, और इसमें वही स्थिति होती है जो मत्स्य न्याय, जिसको मत्स्य न्याय कहते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। राज्य को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। और इसी अर्थ में मैंने पारमिताओं का संदर्भ लिया, दैवी संपदा आसुरी संपदा की चर्चा भगवद गीता में है। तो इन सब में आप देखेंगे कि इसी मूल्य को हमने धर्म कहा है और इसकी व्याख्या निरंतर होती रही है। स्वयं जो धर्म चक्र परिवर्तन है महात्मा बुद्ध के द्वारा, आप जानते होंगे शायद, एक ग्रंथ है ललित विस्तर, जिसमें वो चर्चा करते हैं कि जब बोधि की प्राप्ति हुई गौतम को, तो वो सारनाथ आते हैं गौतम बुद्ध जब बनते हैं वो, तो और उसी सरोवर से एक सिंहासन उपस्थित होता है जिस पर बैठ करके पहले के बुद्धों ने धर्म चक्र या धर्म देशना की थी, और उसी पर पुनः स्थापित होकर के महात्मा बुद्ध ने इसका धर्म चक्र परिवर्तन किया। तो यह धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? वही है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आदि, जिसके ये मूल्य हमारे हैं, जो जिनकी व्याख्या हमारे आचार्य तीर्थंकरों के रूप में, अवतार के रूप में, व्यास परंपरा के रूप में, सिख गुरुओं के रूप में, और बौद्ध साहित्य में जाए तो बोधिसत्वों के रूप में। बोधिसत्व की तो प्रतिज्ञा है कि जब तक अंतिम व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी मुक्ति का आग्रही नहीं हूँ, अपनी मुक्ति को नहीं प्राप्त करूँगा। तो इस प्रकार से ये सारी चर्चा वहाँ आती है। और विशेष करके इस संदर्भ में जो महाभारत काल की चिंता है, ये धर्म का आख्यान है, लेकिन जैसे कि हर समय होता है हर युग में कि अपने बड़े चिंतकों की शायद हम हर काल में ही उपेक्षा करते रहे हैं, यह भी सत्य है। क्योंकि महाभारत के अंत में स्वयं ही वो कहते हैं ऊर्ध्वबाहु विरोम्यश्च न कश्चित् शृणोति माम, कि कब से मैं दोनों भुजाएं उठाकर कह रहा हूँ लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। क्या नहीं सुनता? तो धर्मादश्च कामश्च सधर्म किम सिद्ध्यते, कि धर्म से ही यदि अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तो फिर धर्म की उपासना या धर्म का अनुसरण क्यों नहीं करते। तो इस प्रकार से बार बार इस चीज की हमें स्मरण दिलाया जा रहा है अपने ग्रंथों के माध्यम से। मैं स्वामी जी का जो कृपात्री जी महाराज का जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने जनवाद लिखा है, डेमोक्रेसी जिसको कह सकते हैं, और वो इंटीग्रेट करते हैं जो हमारे सनातन मूल्य हैं और जो वर्तमान में जो चीजें हैं, या जो बौद्धिक विमर्श चलता है पाश्चात्य हो चाहे जो भी। तो उन्होंने लिखा कि जनवाद क्या है? तो जन शिक्षा, निष्पक्ष जनमत, राजनीतिक दलों का अस्तित्व, नागरिकों का शासन में सक्रिय भाग, सतर्कता और आदर्श निर्वाचन व्यवस्था इस जनवाद के लिए आवश्यक है, अन्यथा यह पूरा बंद है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी इस समय इससे अच्छी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं इस जनवाद से या जनतंत्र से। यदि हम इस शस्त्र एवं धर्म अथवा सामान्य मानव धर्म से भी इसे नियंत्रित कर दिया जाए तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया, ईश्वर भक्ति आदि सद्गुणों से युक्त
राम राज्य की प्रणाली ही जनतंत्र की प्रणाली बन सकती है। तो इस प्रकार से ये चिंता हमेशा हमारे आचार्यों ने की है। मैं केवल अंतिम बात कह करके समाप्त करता हूँ। हम शायद जिस देश काल में जी रहे हैं, जिस युग में हैं, तो संभवतः मूल्य विपर्य का युग है, वैल्यू रिवर्सल जिसको कह सकते हैं। और इसीलिए एक समय में चर्चा होती थी शुभ लाभ की, अब चर्चा होती है शुद्ध लाभ की, नेट प्रॉफिट। तो ये कुछ हमारे मानदंड बदले हैं, मूल्य विपर्य हुए हैं, जिनकी चिंता हमें निश्चित रूप से करनी चाहिए। एक बड़ी प्राचीन धारणा या कथा है बृहदारण्यक की, जिसमें देवता, मनुष्य और असुर तीनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा और सुहास के अंतिम समय में कहते हैं ब्रह्मा जी को कि हमें कुछ उपदेश करिए। और ब्रह्मा केवल एक ही शब्द, एक ही वर्ण का उच्चारण करते हैं, त का। और फिर पूछते हैं कि समझ में आई बात? तो कहते हैं, देवता कहते हैं हाँ पितामह समझ में आई, क्योंकि देवता कहते हैं कि हम भोगोन्मुख होते हैं, इसलिए आपने कहा दाम्यत, इसका अर्थ है दाम्यत, अपने वासनाओं का दमन करना। फिर मनुष्य से पूछा उन्होंने कि तुम्हें क्या समझ में आया इससे? उन्होंने कहा दत्त, क्योंकि हम प्रायः संग्रह करते रहते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति है, प्रकृति है एक तरह से कि संग्रह करे, तो उसके लिए उपदेश है कि वह दान करे, संग्रह ना करे, दान करे। और तीसरा है दयध्वम, ये असुरों को समझ में आया, असुर हिंसा में लगे रहते हैं, तो उनके लिए उपदेश है कि वो दया करें दूसरों पर। तो प्रकृति नहीं, संस्कृति की ओर हमें प्रस्थान करना है। ये हमारी प्रकृति हो सकती है ऐसी चीजें, लेकिन जिस राम राज्य में हम को प्राप्त करना चाहते हैं या उसमें जीना चाहते हैं, हमें इस प्रकृति से अलग होकर के या प्रकृति को नियंत्रित करके हमें अपनी संस्कृति की रचना करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। I will not make more than 3 sentences. One, we have had 3 points of view. In fact, first two were fairly aligned to each other. The point that emerges is from the first two discourses that it's a kind of a utopia. It's an ideal kind of state of affairs, and it is reminiscent of the debate that we have in the Western political thought, from Locke to Hobbes, and then Rousseau's nature to society to state, and J.S. Mill finally arguing whether a man can really be free, swatantra, ho sakta hai ki nahi ho sakta. In that sense, I think Gandhiji was more or less, his thought was shaped by Western thinkers. By, for example, unto the last आपने कहा, और सर थॉमस मोर का कहा, सर ने जो बोला, आचार्य जी ने, वो थोरो और टॉल्स्टॉय के जो आइडियाज हैं, वो गांधी जी ने लिए। तो गांधी जी ने अपनी this is my, it is Rajneesh had 5 minutes or 7 minutes less than others, but then he made the second argument, Ram Rajya can be Ram Rajya only when it is Dharma Kendrit. And whether you read Kautilya's Arthashastra or any sort, political sort, a ruler in India, there is no divine right, there is no heredity, there is nothing. He is totally accountable to the people, to the last man. The much maligned episode of the Dhobi saying, and Ram सीता का त्याग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में है तो हमको समझ आ जाता है, तो हमारी सारी फेमिनिस्ट थ्योरी अलाइव हो जाती है. But in Europe they say Caesar's wife must be above suspicion. वहाँ कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि उनकी बात समझ नहीं आती है, अंग्रेजी में है ना, पर बात तो वही है. Caesar's wife must be above suspicion. So to the last man, I mean, to do a thing like this, because this is the accountability
the responsiveness of the ruler. हमने अभी रिसेंटली एक किताब गवर्नमेंट ने बनाई है, हमने अब प्रजातंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र. It is the lokatantra which is Ramarajya. Where, but then that loka has to be, kind of, it has to be embedded in, it has to be founded in very strong dharmic parampara, dharmic traditions. And there is no want of thinking whether you take current cases like, for example, euthanasia or abortion. If you read our own text, we get very good idea about what the dharma point of view is there in everything. So, Ram Rajya, it's an ideal state. In Indian thought, they have tried to put it into practice. Look at the narrative also. Harishchandra है, उसका बेटा बॉडी लेके वाइफ आती है और वो उसको कहता है जब तक पैसे नहीं दोगे अलाउ नहीं करूंगा. और नैरेटिव भी है, टेक्स्ट भी है, शास्त्र भी है और दर्शन भी है इनके ऊपर. But at the same time, great effort has been made to define an ideal kind of system, to ground it. But in the case of Gandhiji or that, I think it is not really they are thinking of Ram Rajya. They are using the idea of Ram Rajya for their political and the other things. And I think with this time we can maybe think differently. But thank you very much, and support thanks to the other speakers. Thank you, sir. Thank you also. Thank you also. Thank you very much, Kapoor sir and the other panelists. Unfortunately, we are running completely out of time, so there is no time for questions. We commence the next session. The next session. Excuse me. So, what we saw from yesterday, that how the epics were used by various leaders, epics of India, Mahabharata and Ramayana, and also various oral epics, tribal epics, etc. How they were used. So this is all that is very nicely led to this session, and also the Freudian matrix of a definition of the epics to the today morning's delineation of the epics across by Nitya Elliott. So Ram Rajya. Now yesterday there was one panelist, one of the panelists, he said, yes, it's wonderful. It's one thing to say, yeah, it was used, the epics were used for this, the epics were used for that. But what about what is the use of those epics today? Do they really unite countries, communities in India as that has been narrow? Or the situation, the reality is different? Do they connect all the communities in India? Excuse me, all of you, please take your seats, please. Rajneesh ji, please take your seat. Take your seat, please. Rajneesh ji, please take your seat. Now, all of you, please. Rajneesh ji. Can you please, all of you, take your seats? Now, in this panel, discussion, today's discussion is about epics, thread connecting the entire country. It will be chaired by Dr. Suprita Paul Kumar. Dr. Suprita Paul Kumar.
Palkumar is an eminent poet, critic, and academician. She has published several collections of poems in English, besides edited, co-edited, and translated books to her credit. She is the chief editor of the book on cultural diversity, linguistic plurality, and the literary traditions of India. And she is a recipient of many prestigious grants, national and international fellowships, and the residencies, like honorary fellow of the International Writing Program, University of Iowa, honorary fellow, International Writers Workshop, Hong Kong Baptist University, etc. And presently, she is serving as a guest editor of Science Academy Journal, Indian Literature. I request Dr. Suketa Palkumar to come to the dais. And I request all other panelists, T.S. Krishnan, to come to the dais. Yeah, only one the case. Okay. Let everybody have tea and come. Yeah, let them come. So, Milind Nawal, Mr. Milind Nawal, Anil Mishra, Mr. Anil Mishra, please come to this. Sachin Kekar. Yeah. So in this, Mr. Mishra is a well-known Hindi writer. He has 4 published poetry collections in studies. His poetry has been translated many edited works in his journal, and he is editing a quarterly magazine called Someday since 2002. He is a president of Pankaj Singh, Smriti Samman, Ram Manohar Samman, others. So Mr. Milind Nawal is working as assistant professor, Center for English Studies, School of Languages, Literature and Cultural Studies, JNU, Cultural Studies, Dalit Writings, etc. And he is a recipient of Charles Wallace India Trust SOAS Fellowship in London. Dr. Sachin Kekar is a bilingual poet, translator, and academician. He has several poetry collections in Marathi and English. His translation of poetry and fiction from Marathi and Gujarati into English have appeared in various journals and anthologies. He has translated and edited an anthology of contemporary Marathi poetry titled Life Update, an anthology of recent Marathi poetry. He is a recipient of Indian Literature Poetry Translation Prize. He works as a professor of English in Faculty of Arts, the Maharaja Shahajirao University in Baroda, and final panelist, Sri T.S. Krishnan, is a noted historian and literary enthusiast. He has done research in the fields of Tamil inscriptions and literature, and has written many articles and books on these subjects. He has compiled some selected inscriptions and copper plates of Chera, Chola, Pandya, and Pallava kings in the book Chera, Chola, Pandya, Kalvettupadum, Cheppeduvum. He has written books on Vijayanagar and Tamil history, and has also translated some notable books in Tamil. So I request Dr. Sukita Palkumar to take over the next session. In the meanwhile, I will be busy sending everybody in. Once the tea is over. Yeah, we will tell you also. Welcome everyone to the last session, I think, of the day, not of the seminar. But I feel that it's in a way a kind of a culminating point already has come. And that probably has something to do with how this thread, which is created by epics across the country, north, south, east, west, and beyond the borders as well. I don't know why we are limiting it only to the country, because actually these epics have gone beyond the borders. And we keep thinking in terms of nation and political borders and so on. But the telling of the tale lies in the spread that it has and the dynamism that it has created in terms of both not just Mahabharata and Ramayana, but I have a feeling that also to some extent from Iran we received Shahnameh. Why are we not talking about that? I think we have the general theme of epics
we have to understand that the epic really comes across to us not as a text for an individual, but a text that we have got created. In fact, we know about this, that Mahabharata has not been created by one single mind. That there is the oral and the written and coming together, and there are many narratives that were put together as late as, if I know correctly, sometime in the late 19th century, early 20th century. All of this was put together as one Mahabharata and standardized in one fact. This is a fact. Now the point I'm making is that it's really a dispersal that we should see. A lot of narratives, one coming out of the other, which is actually the story of humanity. And that is why, particularly when it comes to Mahabharata, it is said that all that is there in this world it can be found in Mahabharata. And all that is not there in Mahabharata cannot be there in life. It's just not there. So it's so kind of comprehensive. And when we say that, I think in the context of the epics that we are talking about, how they have evolved and how these epics have created a whole range of mythology, myths that are spread everywhere. And these myths also by themselves have a dynamism. And in that, what I mean is that they are evolving, they are changing. History has a truck with mythology. History also has a truck with the politics. Politics and history have a truck with epics, which are not permanently the same. They keep changing because history gets inscribed in the new telling of the tale throughout. So one has to see how, for instance, a character like Draupadi has been changing from age to age, and how are the receivers of the epic, in fact, how in their minds something new gets created. So it's not just tales from the tales, etc., which have been already existent, but newer tales. Today's Draupadi would be different. Today's Ravana would be different. So all the mythological characters also undergo a change. The written text doesn't mean that we stop interpreting, the new texts come from there. And I'm sure we have a lot to talk about in that context. All the speakers are well versed and scholars, and perhaps they don't even need any kind of introductory remarks. But all I want to say is that whether it is in the popular domain or it is in the classical tradition, they come together when it comes to epics. That's another very interesting thing, that there is a popular domain and there is a classical kind of literature that has come out of the epics, but they come together when we are talking about epics. And the change also happens not only in the classical domain where the writing is happening, but also in the popular domain, because there is a freedom. And from where does that freedom come? I was thinking that perhaps the written text and the way the tales have been told, they are told in such a way that they are open to fresh interpretations. So there is an aesthetics to it. There is an aesthetics that appeals to different people in different ways. And so there is a dynamism that we need to catch. However, what we do need to understand is that in the context of this theme, the thread, that it's not a binding thread. We must remember that. It's a thread only by virtue of the fact that there are certain characters which a Duryodhan you might find in Uttarakhand to be maybe a god, and in another region he may be a villain. So just depends how you perceive it. But the point is that these characters exist everywhere. How you interpret that, then that's the thread. That's the thread. And it's a very nebulous kind of a thread. However, that is what ultimately makes us say that there is unity in diversity. But the diversity is very important, that we need to focus on, look at, interpret, understand our cultures the way we have developed over time. And I would call upon the first speaker. We have Anil Kumar Misraji as the first speaker, and you've already been introduced. Welcome, sir.
सत्र के अध्यक्ष सभी वक्तागण, सभागार में उपस्थित सभी श्रोता, इस सत्र की शुरुआत एक अच्छी भूमिका के साथ हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि उन बहुत थोड़े शब्दों में इस पूरे विषय को जिस तरह से रखा गया है, ये सभी वक्ताओं के लिए एक तरह का रास्ता भी बना देता है। महाकाव्य वो सूत्र जो पूरे देश को जोड़ता है। दरअसल एक बहुत अच्छी बात पहले कही गई है कि ये सूत्र वो नहीं है जिनको आप कहीं कहीं पर पहचान करके ज्ञापित कर सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि इन्हीं सूत्रों के माध्यम से ही हमारे देश का जो फैब्रिक है वो तैयार होता है। इस आलेख में जो मैं अभी पढ़ूंगा, मैंने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि महाभारत और रामायण जो हमारे दो प्रमुख महाकाव्य हैं, अगर ये नहीं रहे होते तो हमारा जो आज सामाजिक विन्यास है या जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो बिल्कुल वही नहीं होती जो आज है। इस देश की जो अवधारणा की जाती है वो राजनीतिक इकाई के साथ साथ सांस्कृतिक इकाई भी है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक इकाई इसलिए संभव होती है क्योंकि सांस्कृतिक स्तर पर अनेक भाषाओं और क्षेत्रों को जोड़ने वाले सूत्र मौजूद हैं। देश में जनसांख्यिकी की बुनावट हमेशा एक जैसी नहीं रही। अनेक तत्वों ने समय समय पर दखल दिया और संरचनात्मक प्रभाव डाले। इसमें सामाजिक आंदोलनों और कई अनेक व्यक्तियों की भूमिकाएं उल्लेखनीय हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ महाकवियों की कृतियों ने जनमानस पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि वो समय के साथ अधिक गाढ़ी होती गई। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज भारत के विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या एक भाषाभाषी या एक जाति नहीं है। मुख्यतया आर्थिक कारणों से लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में गए और वहां सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तनों को लाने के कारण हुए। प्राचीन भारत में कुशल और मगध इन तीन गण समाजों की बहुत बड़ी भूमिका थी। भरतगण यज्ञवादी संस्कृति के उपासक थे और वहीं मगध वेद संस्कृति के विरोधी थे। कौशल भारत और मगधों के बीच था। इसी क्षेत्र में रामायण और महाभारत दो महाकाव्यों की रचना की गई। कौशलगण कर्मकांडी नहीं थे, लेकिन वे वेद विरोधी मतों के समर्थक भी नहीं थे। व्यास का संबंध नैमिषारण्य से है और वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे रहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भाषा पोषण एक सुंदर कविता लिखी है। वाल्मीकि नारद से कहते हैं कि अपने पूर्ववर्ती कवियों के विपरीत वे देवता के बजाय मनुष्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। रविंद्रनाथ ने बहुत बारीक बात पकड़ी है। वो वाल्मीकि ने मानववाद को स्थापित किया। वाल्मीकि और वेद व्यास की सबसे उल्लेखनीय भूमिका ये राम और कृष्ण को प्रतिष्ठित किया जो मनुष्य थे। इस क्रांतिकारी स्थापना का परवर्ती भारत में गहरा असर देखा जा सकता है। पहला कारण ये कि राम और कृष्ण वैदिक देवता थे, क्योंकि इसके पहले वैदिक देवताओं के पूजन की परंपरा थी। वो सामान्य मनुष्य थे और मनुष्य कभी भी अपने को जब कनेक्ट करना होता है तो देवताओं के साथ नहीं कर सकता है। तो जब भी अपने को कनेक्ट करेगा एक मनुष्य के साथ करेगा। तो वाल्मीकि और वेदव्यास
दोनों की विशेषता ये है कि वो एक मनुष्य के चरित्र को लाते हैं, और ये मनुष्य के चरित्र ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी कमियां भी हैं, व्यक्तित्व की भी कमियां हैं, लेकिन वो इन कमियों के साथ जूझते हैं और जूझ करके, संघर्ष करके चमकते हैं। एक कारण ये भी है कि मनुष्य आस्थावान प्राणी है, वो केवल तर्कों के आधार पर जीवन नहीं जी सकता है। जैसा कि हमने अभी बात की कि मगध क्षेत्र में बौद्ध और जैन इन मतों का प्रचार हुआ, और यहाँ पर वेदों की संस्कृति के विरोध में बहुत सारे अभियान उस समय चलते रहे, लेकिन यहाँ आस्था को बहुत अधिक स्थान नहीं था। लेकिन कौशल में इन दो महाकाव्यों की जो रचना हुई और जो बाद के समय में इनकी इतनी व्यापकता हो पाई, उसका कारण ये भी था कि जहां पर केवल देवताओं की संस्कृति की बात नहीं की गई, जहां पर केवल तर्क की बात नहीं की गई, वहां पर मनुष्यों की भावनाओं और आस्थाओं को भी स्थान दिया गया। महाभारत के अंश गीता में वैदिक कांडों के विरुद्ध राम और कृष्ण श्याम वर्ण के निरूपित किए गए, जो इन पात्रों की स्वीकृति को सर्वव्यापी करते हैं। महाभारत वो पहला काव्य ग्रंथ है जो भारत की राष्ट्रीय संकल्पना को प्रतिष्ठित करता है। अनेक बिखरे या परस्पर विरोधी तत्वों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने का प्रयास है, हालांकि संघर्ष कम नहीं है। रामायण और महाभारत का प्रभाव न केवल भारतीय काव्य साहित्य पर पड़ा, बल्कि ये दोनों ही सामान्य जन के बीच गहरी छाप छोड़ने में सफल हो रहे हैं। इन दो महाकाव्यों की परंपरा में पूरे देश में राम और कृष्ण को पूजने वाले मंदिरों का निर्माण किया गया, कहानियों के अनेक रूप गढ़े गए। कल्पना की जा सकती है कि रामायण और महाभारत अगर लिखे नहीं गए होते तो आज इस देश का सामाजिक विन्यास किस तरह का होता। काव्य की दृष्टि से रामायण और महाभारत के अतिरिक्त कालांतर में कुछ और महाकाव्यों की रचनाएं हुई जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। कालिदास, भवभूति, भारवी और माघ ने कविता के स्वर्ण युग में अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं दी, जिनमें रघुवंश महाकाव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम। मध्य युग में श्रीहर्ष ने नैषधि चरित की रचना की। इसके बाद तुलसीदास कृत रामचरितमानस न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में ख्यात हो गया, और आज स्थिति यह है कि भारत के बाहर भी तमाम ऐसे देश हैं, फिजी, मॉरिशस या सूरीनाम, यहाँ पर जाएं तो उनके यहाँ कोई और पुस्तक मिले न मिले, लेकिन रामचरितमानस की किताब जरूर मिल जाती है। और आस्था कुछ इस तरह की है कि वहां पर लोगों ने अपने पास की नदियों को गंगा नदी मान करके उसको पूजना शुरू कर दिया है। ये रामायण का प्रभाव आप कह सकते हैं। और रामायण जो संस्कृत में लिखा गया उसकी व्यापकता शायद उतनी ना हो पाती, लेकिन अपनी भाषा में लिख करके या आम आदमी की जो बोलचाल की भाषा है उसमें रामचरितमानस की रचना करके तुलसीदास ने उसको जन जन में लोकप्रिय बना दिया। रामायण से प्रेरणा लेकर कंबन ने तमिल में, कृत्तिवास ओझा ने बांग्ला में, रामदास और एकनाथ ने मराठी में काव्य कृतियों की रचना की। पेरियार ने 20वीं शताब्दी में तमिल भाषा में सच्ची रामायण लिखी। पेरियार का पूरा नाम एबी
रामास्वामी नायकर है। महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद पेरून देवनार ने किया। बांग्ला में अलाउद्दीन हुसैन के समय कृष्ण चरितम नाम से अनुवाद किया गया। यदि भारत के साहित्य का अध्ययन किया जाए तो रेखांकित होता है कि महाकाव्यों का स्थान सर्वोपरि है। वे ऐसे सूत्र हैं जो पूरे देश के ताने बाने को रचते हैं, या उसकी उल्टी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी देश की एक इकाई के रूप में पनपने की प्रक्रिया महाकाव्यों विशेषकर रामायण और महाभारत के कारण संभव होती है। रामायण और महाभारत दोनों में भारतीय मान्यताओं के अनुसार त्रेता और द्वापर युग में पैदा हुए दो व्यक्तियों का चित्रण है जो मानवीय सीमाओं को बहुत दूर तक बढ़ाते हैं। कहते हैं ना कि बाउंड्री बढ़ा दी, तो जो मानव की क्षमता है उससे काफी आगे ये लेके जाते हैं। उन्हें अतिमानव की संज्ञा देना अनुचित नहीं होगा। अपनी असाधारण क्षमताओं के कारण ये चरित्र पूजनीय बन गए और यदि उसमें श्रद्धा का अंश सम्मिलित किया जाए तो उन्हें देवता भी माना गया और रामचरितमानस में तो उन्हें साक्षात ब्रह्म ही कह दिया गया। परंतु आप ध्यान दें, ये दोनों ही चरित्र या दोनों ही नायक आप कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत ये अपने जीवन भर संकटों से घिरे रहे। क्या कोई राम या कृष्ण जैसा अपने जीवन में होना चाहेगा? क्योंकि एक क्षण भी चैन नहीं था। आप देखें तो इतनी ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं और अंत में दोनों की मृत्यु किस तरह से होती है। एक बहुत ही दुखद मृत्यु दोनों को प्राप्त होती है। लेकिन ठीक है, केवल उपलब्धियों के बल पर या ये कहें कि उन्होंने बड़ी बड़ी विजय प्राप्त कर ली, केवल इसके बल पर कोई महापुरुष नहीं बन सकता था। सच्चाई ये है कि इतनी सारी जो विपदाएं थीं या बाधाएं थीं उनको पार करने के बाद ही ये दोनों चरित्र इतने बड़े हो पाते हैं। कई बार कृष्ण के बारे में जब चर्चा की जाती है तो कृष्ण ने कितने युद्ध लड़े और कितने में विजयी हुए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कृष्ण ये जानते हैं कि कहाँ लड़ाई लड़नी है और कहाँ नहीं लड़नी है। कहाँ नहीं लड़नी है ये लड़ाई लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोनों ही चरित्र ऐसे हैं जिन्हें धर्म का आचरण करने वाला और सदाचारी कहा गया। आज भी विषम परिस्थितियों में पूरा देश रामायण और महाभारत की तरफ देखता है और उसे अपनी समस्याओं के लिए कोई न कोई सूत्र इन ग्रंथों में मिल जाते हैं। यद्यपि आज धर्म की अवधारणा पर पाश्चात्य चिंतन का असर है, किंतु रामायण और महाभारत में धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं है, यह व्यक्ति और समाज के जीवन का नियामक तत्व है। परंपरागत विधान के अनुसार अर्थ और काम का सेवन धर्म के नियंत्रण में ही करना चाहिए। महाभारत के अंत में एक प्रसिद्ध युक्ति है, ऊर्ध्वबाहु विरौमेश न च कच्छित् शृणुत में धर्मार्दर्शश्च कामश्च किमर्थम न सेव्यते। मैं बाह उठाकर उच्च स्वर में कह रहा हूं किंतु कोई सुनता नहीं। धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, उस धर्म का सेवन क्यों नहीं करते। महाभारत में मूल्यों को लेकर जटिल संघर्ष दिखाई देता है। महाभारत के पात्र और उनके आचरण न पूर्णतया धर्मानुकूल कहे जा सकते हैं और न पूर्णतया अधर्म की तरफ झुके हुए। जैसे कहते हैं कि व्हाइट और ब्लैक, इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं है, वो सभी कैरेक्टर्स ग्रे हैं। हर चरित्र में दोनों रंग हैं। युधिष्ठिर जिनका नाम धर्मराज है वह भी डगमगाते हुए दिखाई देते हैं। कृष्ण ने उनकी सत्यवादिता का प्रयोग महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा वध के लिए किया था और ये योजना युधिष्ठिर को अज्ञात नहीं थी। धर्म को इतना महत्व देने वाले युधिष्ठिर भी उद्योग पर्व में कृष्ण से कहते हैं, धर्माहु परम धर्म धने सर्वम प्रतिष्ठितम जीवन्ति धनिनो लोके मृता ये त्वदना नराः। धन ही परम धर्म कहा गया है। धन में सब कुछ प्रतिष्ठित है। दुनिया में वही लोग जीवित रहते हैं जिनके पास धन है, निर्धन लोग तो मृत ही हैं।
बात देखें कि पुरुषार्थों में जहां पर धर्म, अर्थ और काम, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है, वो धर्म की और अर्थ की बात कर रहे हैं। दुर्योधन के दूत के रूप में भेजने से संबंधित है। शांति पर्व में एक स्थल पर युधिष्ठिर और भीष्म के बीच आचरण को लेकर के संवाद होता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए भीष्म ने एक पौराणिक रूप का सहारा लिया और प्रहलाद की कहानी सुनाई। एक बार इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर दैत्यराज प्रहलाद से उनका सील मांग लिया। वह सील प्रहलाद के शरीर से एक तेज की तरह निकलता हुआ दिखाई दिया। सील के बाद धर्म चला गया। उसके बाद सत्यत हो गई। आज भी भारत के घर घर में अर्थ उपार्जन के साथ आचरण और नैतिक नियमों को प्रधानता दी जाती है। ऐसा समझा जाता है कि अनैतिक रास्तों को अपनाकर अर्जित किया गया धन अधिक दिनों तक नहीं टिकता। रामायण और महाभारत दोनों में धर्म अधर्म की व्याख्या उस अर्थ में नहीं हुई है जिस अर्थ में आज उन्हें जाना जाता है। महाभारत में धर्म शब्द का अभिधान व्यक्ति और समाज दोनों के संदर्भ में किया गया है। महाभारत के कर्ण पर्व में धर्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा यस्यात् धारण संयुक्त सधर्मी निश्चय। धारण करने के कारण धर्म है। धर्म प्रजाओं का धारण करता है जिससे लोक का धारण हो, लोक की स्थिति हो। आधुनिक संदर्भ में इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के समकक्ष देखा जा सकता है जिसमें जन कल्याण की भावना प्रकट होती है। समाज का निर्माण और उसकी एकता इन्हीं तत्वों के बल पर होती है। यहाँ तक कि अगर कोई बात अहितकारी है परंतु सत्य है तो उसे श्रेयस्कर नहीं मान सकते। सत्य का कल्याण के साथ संबद्ध होना आवश्यक है। शांति पर्व में कहा गया है, सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादपीतम वदेत यद् अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। सत्य वचन श्रेष्ठ होता है किंतु सत्य की अपेक्षा भी हित करने वाला वचन श्रेष्ठ है। जो प्राणियों का अत्यंत हित करने वाला हो वही सत्य है, ऐसा मेरा मत है। महाभारत की वर्णाश्रम व्यवस्था आधुनिक समाज शास्त्रियों के सबसे अधिक निशाने पर आई, किंतु ये बताना आवश्यक है कि महाभारत में भी जाति या वर्ण व्यवस्था आत्यंतिक नहीं है। वर्ण व्यवस्था गुण और कर्मों के विभेद पर आधारित है। सर्प का रूप धारण किए हुए नहुस के प्रश्नों का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, सत्यम दानम क्षमाशीलम अनृशंसस्य तपो घृणा दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः शूद्रे तु यद् भवेत् लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते न वै शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। जिस व्यक्ति ने सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये गुण पाए जाएं वही ब्राह्मण है। नहुस के कहने पर ये गुण शूद्र में भी पाए जा सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में वैसे गुण पाए जाएं तो वह शूद्र नहीं, और ब्राह्मण में वो गुण न पाए जाएं तो ब्राह्मण नहीं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महाभारत के रचनाकार वर्णों की ये व्याख्या उस समय कर रहे हैं जब आधुनिक मूल्यबोध और विमर्श नहीं थे। दूसरे ये भी कि जाति जो बाद में रूढ़ हो जाती है और पूरी तरह से जन पर आधारित मानी गई, एक लंबे कालखंड में अपनी विकृति को प्राप्त करती है। इस श्लोक से ये तो नहीं कहा जा सकता कि वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से डायनेमिक थी, किंतु ये अवश्य कहा जा सकता है कि महाभारत की वर्ण व्यवस्था में आचरण को बहुत अधिक महत्व दिया गया। मित्रों, ये मेरा आलेख काफी बड़ा है, मैं पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ, समय का अभाव है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामायण और महाभारत के बाद रामचरितमानस में अनेक प्रसंगों में व्यावहारिक स्तर पर तमाम इस तरह के उल्लेख मिलते हैं जो हर व्यक्ति को, हर समाज को
और हर सत्ता को कहीं न कहीं से दिशा निर्देश देते हैं। और खासतौर पे उत्तरकांड में अगर आप देखें तो राज्य किस प्रकार से होना चाहिए, राजा के धर्म किस प्रकार के हैं, उसके कर्तव्य किस प्रकार के हैं, आज जिस प्रकार के आदर्शों की कल्पना की जाती है वो सभी सूत्र आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इन तमाम गुणों के कारण ही या इन तमाम विशेषताओं के कारण ही आज ये न केवल पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया की तमाम जो शक्तियां हैं वो उनसे प्रेरणा प्राप्त करती हैं। खासतौर पे गीता की बात अगर की जाए तो आज विदेशियों के हाथ में भी जब कोई बाहर से आता है तो आप गीता देख सकते हैं, क्योंकि गीता वो दार्शनिक ग्रंथ है जो न केवल आस्था को आधारित करके लिखा गया, बल्कि तर्क की कसौटी पर भी वो उतना ही खरा उतरता है। इस सत्र वक्ता आएंगे वो तमाम और बातें कहेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, महाकाव्य सभी न केवल किसी किसी रूप में भारतीय राज्य व्यवस्था, कूटनीति, सामाजिक जीवन विद्यमान है, बल्कि व्यक्तियों को भी अनुप्राणित करते हैं। देश के किसी भी कोने में ये तत्व किसी दूसरे भाग के व्यक्ति को जोड़ते हैं। जहां महाकाव्यों की कहानियां भारतीय आधुनिक समाज को स्थूल रूप में परस्पर करती हैं, वहीं सदियों सदियों से आ रही सांस्कृतिक अवधारणाएं और नैतिक मूल्य दिशा निर्देश करते दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Ji. I think you have started off well by basically establishing the values that these epics present and how that in itself becomes a kind of a connection between one, I would say, one human being and another. And if you are focusing on that, I believe that we will continue with the next speaker, who is going to really probably focus a little more into how does it diversify also and sustainize the entire domain. Over to Milind. Thank you, Chair and co-panelist. I think that was my working title. The title is but I'll be talking on basically bhakti movement, and I'm trying to think about that, how one can think about this cultural heterogeneity in medieval India. So it started in 7th, 8th century, but I'm not actually talking about bhakti movement in terms of historical time, but I'm talking about bhakti movement in terms of the cultural heterogeneity. So I'm trying to talk about that, how one can think about this cultural heterogeneity, which became the religion of medieval India, and this religion of masses or practice of masses invoked in response to religious canonical traditions such as Ved, Upanishad, Smritis, and basically this response is I would argue that this response, bhakti, as a response to religious canonical tradition, is response to create the access of divinity, divine divinity. So bhakti, bhakti. So etymological meaning of bhakti in Sanskrit is bhaj, or sharing. So I would say that the sharing or this bhaj have created the
culture of solidarity. So this solidarity is basically based on the idea of equal sharing, sharing of social emotions, sharing of idea of divinity through bodily performance such as bhajan, kirtan, satsang. In Western India, we would see that kirtan is one of the dominant tradition. People walk for B.P. Chitra's work is very interesting work to understand that how this culture of pilgrimage is established or established by Varkari Sampradaya in Western India. Do you want to speak on this speaker? No. Okay. So basically, like in North India, also we would see that this Kavadiya culture is also very interesting to think that how this culture of solidarity came in response to the culture of Jnana Marga. So Shankaracharya used this concept. So culture or the idea of divine, which is based on the Jnana Marga, that is religious sculpture and religious canonical textual tradition. So Jnana Marga and Bhakti Marga. So these two, Jnana Marga and Bhakti Marga. So Bhakti Marga is culture of bodily performance, is culture of idea of emotion, which is based on the sensory perception. So social emotions which are circulated in various bhakti marg tradition. So I would see, I'll take the example of Ravidasi tradition, Kabir Panthi tradition, Tukaram's Gatha, started from Eknath to Tukaram to the 16th century, various saints, Marathi saints. In Tamil Nadu or in South, we will see that Shiva Bhakti is one of the center of Bhakti tradition, and later on there are various, there is synchronization of this culture through various versions of Bhakti. So I think it's very important to think that how this Bhakti Marg is response to Jnana Marg is invoked with the biographic memory. So post or Ravidasi tradition, Kabir Panthi tradition, or various Abhang Sutra or Gathas. These Abhang Sutra Gathas are teaching of that particular saint or that particular sant in Marathi. So basically, this teaching is documented through biographic memory. So Kahe Kabir, Kahe Namdev, Kahe Tukaram. So this, whenever we see this Kahe, is actually the circulation of biographic memory of that tradition. So it's very interesting to think that how these biographic memories became the archives, cultural archives of this tradition. So tradition which is based on the sensory perception, and the sensory perception is basically based on the bodily experience. So body is the medium of transcendence. So if we, this idea of pilgrimage, idea of songs, idea of dance, kirtan. Kirtan in Maharashtra is one of the important, and artisan caste, agrarian caste actually follow this tradition as a tradition of, transcendence. So physical bodily experience became the important condition in terms of social emotions, and these important conditions help to transcendent the follower or
the devotees of that particular deity. So this social emotion is very important. Is very important aspect of this tradition. So this heterogeneity is actually create the heterogeneity of body and mind, Cartesian conflict, body and mind. So we would say that body is always considered as a inferior sense of experience. So these inferiorities, bodily inferiorities, or body as a flesh is considered as a inferior, and Jnana Marga or Dhyana Marga is considered as a superior experience. So I think it's very interesting to see that how this Bhakti Marg is responding to the responding to the Jnana Marg, which is superior in terms of experience, and these superiorities are actually maintained and practiced through various religious belief and religious tradition. So basically, bodily experience and faculty of mind. So these are important conditions. So I think Bhakti Marg is the physical experience is the source of is the source of knowledge, or is the source of is the source of yes, knowledge. So emotion is the source of knowledge, or so that this is one. Bhakti Marg, Jnana Marg, body and experience. This empirical experience, empirical body of experience, is actually is actually collaborated with the moral ethical teaching. If we see the corpus of this and kirtans and abhangs, we would see that these kirtans and so the content or the corpus of these sutras or abhangs is actually the corpus which is replacing the common sense, cultural common sense of contemporary society. So this replacement is based on the idea of reason, idea of equality, idea of solidarity. So entire Kavir's Doha is actually replacing the idea of Brahmanatva, replacing the idea of purity, replacing the idea of karma. So these values, Bhakti tradition configured these new values based on the aspirational social being, and this aspirational social being is configured through these modern values such as equality, solidarity, reason, scientificity. Tukaram's dohas are about the response to superstition. He's actually rationalizing the idea of religion, idea of human behavior, idea of equality based on the traditional moral ethical teaching, and challenging the traditional moral ethical teaching through his dohas. So the point which I'm trying to make here is that Bhakti tradition is actually tradition which is configuration of this new values, and these values are replacing, or these values did replace the common sense, Gramscian or Bordeaux's common sense, and this common sense emerged as a new religion or as a new movement. So I think the point which I'm trying to make here is that Bhakti is a response to Jnana Marga, Bhakti Marga and Jnana Marga. B, idea of religion, which is emerged from flesh or body in response to the faculty of mind, where bodily experience is important, and this bodily experience or the sensory experience is important condition in terms of practicing religion. So the entire
entire practice of religion through kirtan, doha, abhangs is actually meditated through bodily experience. And this bodily experience is actually, bodily experience became the condition to, or vehicle or medium to transcendence or to, pass through the religion through bodily experience in response to faculty of mind, which is trajectory of Jnanamarg. And further, this value of Bhakti Marg, which is configured and which is replaced by various Bhakti saints through various, the corpus of Bhakti tradition. And I would say Ravidas, Kabir Pant, Maharashtrian Varkari, Sampradaya. We can take the example of Shankardev tradition, Chaitanya tradition. There are various parallel simultaneous traditions, which was actually responding to various kinds of structural inequalities, as well as they were responding to the idea of religion, which was denied to certain social groups, which had certain kind of, which had certain social identities, such as lower caste or middle caste. So artisan caste and agrarian caste, whose caste, to whom idea of divinity was denied, it was created through this bhakti marg, and this bhakti marg actually based on the, love is the important aspect, love, solidarity, and spontaneity. I think these are important aspect of bhakti marg. So the entire is about love, spontaneity, and solidarity. Is probably one of the important character which have created the larger fraternity among various social groups in medieval India. And probably this fraternity or this spontaneous culture created the idea of divine and divinity through their own medium such as body. So the idea of religion was denied to certain social groups, had access through the body, through the biographic memories, and these biographic memories are circulated through public culture. So what Bhakti tradition is prominent public culture in contemporary time also, and this public culture is visible in our everyday life. So we would see that how this public culture is actually in continuation with certain kind of practices, and how this cultural public practices is responding to, or is responding or continuing the idea of religion in various ways. So I think this is something which I wanted to, share with you. So thank you for your patience. Thank you very much, Milind. I think this is what I also hinted at, that you would probably diversify, and that's very significant, because if you just see as the epics as monoliths, then it's problematic, as a monolith, a frozen monolith, as it were. So when you're talking about Kabir, and if you're talking about, particularly when you say Kahe Kabir or Kahe Tukaram or whatever, the context becomes that of how, whether it is through the epics or otherwise, the stress is on what the truthful man or the saint or the Sufi might be saying, and how that in itself becomes a tradition. And in the formation of the tradition, there would be ideas from the epics going around and circulating everywhere. So it would be Sant Tukaram in
one region, and another region it would be Kabir, and yet another region it would be probably Lal Ded. So there are different people who ultimately, the sayings of whom became traditions unto themselves. And then when you're looking at mind-body dichotomy and you're bringing that in, I think it's very significant to see that as well, because it's not just through abstract, transcendental messages that one is talking about in the context of even epics. So that's how I connect the epics with the tellings in the popular domain. Sachin, over to you. And I'm sure you, as usual, will bring the whole debate to modernity and maybe a crisis of modernity. Go ahead. Distinguished members of the dais, Chair Sukrita ji, and the scholars. At the outset, I would like to thank Sahitya Academy for having me here and giving me an opportunity to share my views. And something which is extremely fascinating for all of us is the appeal of these epics, which seems to be undying. And even in the times when globalization is behind us. So what I'm trying to reflect upon here is what is the reason of this undying appeal of these texts. And for that, I have looked at one trope, one idea, which is not central to the Mahabharata story, but has become very important trope in the writings of modern Marathi as well as bilingual Marathi writers. So I'm going to talk about the novel called Astik by Sane Guruji, a very prominent Marathi Gandhian scholar who is famous for his work Shamchi Ai. And also Sarpasatra by Arun Koletkar, which is one of the very sharp, ironical, and probably a major poem to emerge in the past 20-30 years. So one of the reasons why Mahabharata seems to be of so much appeal to all the writers is described by Mahabharata itself. It describes itself in this way in Adi Parva. Sarvesham kavi kavim mukhyanam upjivyo bhavishyati parjana eva bhutanam akshayo bharata druma. These are two very interesting metaphors here. One is that it is upjivya kavya in the sense of something that gives you upajivika. By upajivika we mean livelihood, but the adjective upjivya is a very fascinating one. And then also it compares itself to rains, that is all the people, Parjanya, Sarva Bhutanam, and Akshay Bharat Druma as a tree that is indestructible. These are the traditional understandings of why Mahabharata is so appealing. However, Mahabharata, what I am trying to argue in this paper, that the reason for the appeal of this great epic is not merely because it seems soothing like rains, giving an opportunity to reflect upon the livelihood of the poets, but because it raises a knotted question relationship between violence, complex civilizational notion in modern nation state. The Mahabharata is a massive expression of genius of entire civilization, finally reveals certain enduring ethical crises and civilizational fault lines, making it continuously and tantalizingly relevant. Indian writers and poets across the subcontinent have retold the episodes and stories from this splendid storehouse of motifs, symbols, and narratives to articulate their own historical predicament and socio-cultural projects. The figures, situation, and events from the epic are integral part of our everyday conversations and cultural consciousness across several Indian languages. Understandably, the retelling of these Mahakavyas have also played an indispensable role in modern Indian literary discourse,
and historical constructions of Indian cultural modernity. This paper suggests that the flow of sacrifice, which I'm going to talk about a bit, that seems to link up the complex question of violence and dharma remains all the more relevant in modern times. So as Italo Calvino has very famously said, that the classic is a text which has not really finished what it has to say. So the question of ethical and the dharma and its relation to violence is something about which Mahabharata has not really finished what it has to say. In that sense, it's a classic. In the light of this understanding of the epics, the current paper explores the novel Astik, which appeared in 1949 by Marathi Gandhian socialist Pandurang Sadashiv Sane, that is also widely known as Sane Gurji, 1889 to 1950. The novel that appeared in 1949 before Indian independence, and the other text that I'm looking at is Sarpa Satra, which appeared in 2003, but probably was written a decade earlier, in English as well as in Marathi. The poem exists in both the languages by Arun Kolatkar. To discuss this of the Mahabharata, and I consider them as two moments of Indian modernity, before independence and probably at the turn of the second turn of 20th century. So I will just revisit the story of Astik. The story of Astik in Adi Parva is considered mostly as a frame story and largely extraneous to the central storyline. And most of the popular retellings of the great epic do not focus upon its significance. The story of King Janmajaya and his Sarpa Satra, or the snake sacrifice, which was interrupted by Astik, whose father is a Rishi named Jaratkaro, and his mother is a snake, also named Jaratkaru, forms the second frame of the narration, where the primary or the outermost frame is the Satra of Shaunak Muni in Naimisharanya, as is well known. So Ugra Shravas, who is narrating the whole epic, has heard the epic from Vaishampayan at Janmajaya's Sarpa Satra. Janmajaya, as we are aware, is avenging the assassination of his father, King Parikshit, by Takshak, and Takshak is avenging destruction of Khanda forest by Arjun and by Krishna. And assassination of Parikshit is also an outcome of curse upon him after he insulted an ascetic doing tapasya by putting a dead snake on his neck. Janmajaya's sacrifice is also an outcome of a curse given by the mother of all serpent race. The mother is named Kadru to her sons when they refused to cheat in a way they had made against Vinata, the mother of Garudas. And all these stories are there in the first Adi Parva of Mahabharata. And curse will cease when a Jaratkaru shall take a Jaratkaru as wife. A Brahmin will be born who shall set snakes free from the curse. After millions of snakes perish in Sarpa Satra, Astik intervenes by poetically thinking Janmajaya, who is pleased by his literary eloquence and decides to confer a boon upon him. Astik demands concluding of snake sacrifice so the race of his mother is saved. When Takshak, who is hiding with Indra, is about to drop into sacrificial fire, Astik freezes him in the mid-air by saying, "Stay, stay, stay," 3 times. He is pleased with Astik's power and his eloquence and grants him the boon. This is the story of Astik. Scholars found Sarpasatra quite intriguing and actually non. In seminal, the motif of interrupted sacrifice as an embedding narrative, Christopher Minkowski has argued that the three stories of Mahabharata, namely Shaunak and Janmajaya, are set in satras or extended ritual sacrificial actions, not only for thematic and pragmatic reasons, but these frame stories reveal the most characteristic narrative techniques of embedding story within a story. Which is based, according to Minkowski, on the principle of architectural sequencing and hierarchy of the ritualistic Vedic sacrifice and its structure. So the epic mirrors the Vedic sacrificial structure.
Interestingly, Minskovsky also analyzes the reference to both the 12-year satras, as in Shaunak Munis, and Sarpa satras in Vedic literature as well as Shrauta literature, and points out that how Janmajaya's Sarpa satra is an anomaly, and it has variance with the original ideas behind Sarpa satra. The ones mentioned in Bauddhaya Shrautra declare that it does not have that apocalyptic effects of destruction of all serpent race on the planet, but of winning worlds, of sons, cattle, and whoever performs it is not harmed by the serpents. He also notes that the earliest originating myth of Sarpa Satra in Bauddha Sutra is performed by the snakes themselves in order to gain poison and also power to lose skin in the place called Khanda Prastha, which is again coming back with Arjun. In later and broader study of motives of interrupted sacrifice in Sanskrit epic, Minkov points out how these frame stories of Mahabharata connect to the larger theme of the epic. That is the abnormal choice of victims like snakes instead of usual sacrificial animals, the total destruction brought about by ritual violence, and motivational of patrilineal dynastic honor in impelling Janmajaya's performance, and also power of poetry of Astik, something which neither Politker nor Sane Gurji takes up as a major theme, power of literature itself. However, connection between violence, sacrifice, and dharma in the epic has not been overlooked by scholars. Bromkhorst notes that sacrifice is a common motif and metaphor in the epic, and even the war is described as a sacrifice. He points out that the authors of Mahabharata recognize two kinds of sacrifices: one in which sacrificer sacrifices himself or his metaphorical substitute; in the other, he sacrifices his enemy or enemy's substitute. Tamar Reish note that the central trope of the epic is the triple equation of sacred order, dharma, sacrifice, yagna on one hand, and with strife or conflict. And he calls these motives as agonistic. And he notes how Sarpa Satra reveals this agonistic worldview that informs this motive. And he places these motives in historical context. And he points out that the epic, which was composed between 400 BC to 400 CE, how tribal societies are progressively marginalized and were replaced with emerging kingdoms and empires. The earlier Vratya and Satra forms of sacrifice were more worldly, with their focus on violence and power, while the more classical form of sacrifice emerged later with the development of Mimamsa, which emphasizes the otherworldly nature of sacrificial work. Buchanan goes on to say that Book of Astik not only authenticates Janmajaya's sacrifice as the setting of Vaishampayan's recitation of the epic, it also confirms or reconfirms the evil of the snakes. And he also points out that this whole business of Sarpa Satra must be terrible for non-Aryan population of India in those days. That's what Buchanan emphasizes. Interestingly, this is precisely what Sane Gurji picks up, the conflict between Arya and the serpents or non-Aryans, as the central theme of his novel. And when we come to Sane Gurji, we come to the 20th century. And what is the role played by these epics in construction of Indian modernity is something that Aparna Dharwarkar has discussed at length, so I'm not going to go into its details. But what she's basically arguing is that instead of conceiving nation as an imagined community or invented part and traditions as being invented, we should draw upon the ethno-symbolic approach to the question of modernity and nation, which does not mean that we should commit the fallacy of retrospective nationalism or assert a spurious civilizational unity. The issue for her is not whether past is real outside its modern construction, but how it comes to be reimagined during the modern period and what roles these reconstructions play
in evolving nation ideas of nation and nationhood, and this is precisely the frame which I am using to look at these two novels. Out of these two, the first one is lesser known. Sane Gurji's Astik was written when he was imprisoned in Nashik jail in 1933, and the novel appeared in 1949. Sane Gurji says in his preface that Astik is a kind of visionary, a kind of founding father of modern nation almost, because he envisions a composite national culture for the fertile, rich and vast nation where multiple races, cultures and religions would flow into it. And nation would welcome them and create a mixed or sammishra, beautiful, manohar and vishal sanskriti. He inaugurates this vision, that is Astik, inaugurates this vision by trying to achieve unity between Aryas and the Nagas. For Guruji, the figure of Sheshashahi Vishnu is a symbol of this composite culture, and the festival of Nag Panchami is also symbolic of the same vision. Guruji reinterprets the name Astik not as a person who believes in God or even Vedic traditions, but person who has faith in inherent goodness of human beings and who puts in all his efforts to achieve holistic development of human life. Guruji himself says that he himself carries the same vision of Astik, and he would articulate the whole vision of national culture in his famous book called Bharatiya Sanskriti. However, his vision, he says, is at odds with the reality that is in front of him, where the ideals of Hindu-Muslim unity, he says, seem like a mirage. And yet he believes that this Nastikta, that's his word, will cease to be. He says that the closer the no moon night is, closer is the arc of moon. Even if the condition is incredibly difficult, this experiment, Astik Prayog, will be successful one day. And he has full faith that this Astik's vision and Prayog is the very reason why India as a great nation is still alive. So you can see how a peripheral narrative from Mahabharata is used to become almost a central narrative of national culture in Sane Guruji. It would be useful to note that Astik in Mahabharata was intervening in order to save the race of his mother rather than envision a national culture based on modern liberal humanistic ideals. And Guruji's rewriting of Mahabharata makes sense in its historical context. When Guruji was jailed in Nashik and later in Trichinopoly in the early 1930s, apart from the question of Hindu-Muslim relation, the rise of Dravidian movement is also something that is very close to his consciousness then. Because of lack of time, I'm just going to talk about this novel very briefly. Yeah. So the novel opens with Prayogpati, that is Sutradhar, the Lord of Performance, waking up Parameshwar by saying that the very reason you created this great nation full of rich diversity and vastness is now threatened, imperiled. So he wakes up Parameshwar in great haste. And the Lord says that even if it looks very dark right now, it is only the elites who want to divide the society. Aryas and Nagas are intermarrying and creating composite culture on their own, except for the Pratisthit people, the elites, who are dividing them constantly for their own purpose. And the story goes on, and I have only 2 more minutes. In a nutshell, if you compare this with a modern Sarpasatra by Arun Kolatkar, then you find that at some point, Guruji is very reverential to Bharatiya Sanskriti, especially the Vedic framework. Arun Kolatkar does not seem to spare anything. He is questioning Vyas and all the intellectual superstars, in his words, who have gathered at Janmajaya's sacrifice, and he thinks that they are complicit in this genocidal project. So he questions them through Jaratkaru, talking to Astik. He is also very critical of Takshak. He calls them terrorists, and he should not be left. And finally, he ends the poem
by talking about what will happen if the last serpent on whom earth is kept alive almost, that is the Shesh. If that goes into the Sarpasadra, what will happen to earth? And Shesh is brother of Jaratkala. So she is telling Astik that if this last serpent even nods his head, then what will happen? And he goes on to look at the whole environmental catastrophe that Arjun and Krishna wreak upon Khandav forest at great length, something that is very marginal to Sane Guruji's novel. So you have got these two kinds of imagining of modernity. One is very nationalistic, inclusive, utopian. The other is more interrogative, extremely sarcastic, ironical, but also individualistic. And nation is no longer the central trope or central figure in Golatkar's imagination. So you can see that 50 years have passed by in these two texts, and the whole way of thinking about Astik's story has changed. Astik is no longer a kind of foundational figure of the nation, almost like Gandhi. So Astik is almost equivalent to Gandhi in Sane Gurji, which he is not in Kolatkar. For Kolatkar, he is a young boy, and to use his own words, and I will stop with that, is that because he is green behind ears, he does not look at the world through the dark prism of a wound infected by dirty bandage of history. That's how he puts it. So this is where I want to stop. I will be very happy to respond to some gaps which I have left because I have skipped over a lot. So I again want to thank Sahitya Academy for having me here. Thank you. Thank you, Sachin. Thank you very much. I think this is, now we've come to the modern period, obviously, from medieval times. And I would say that this is very intriguing, and actually we could go on for a long time discussing this, and hopefully there would be some questions at the end. And particularly because this whole question of, the 50 years that you talk about, the gap, and how is modernity constructed and then demolished and interrogated. And I think these things happen simultaneously, particularly the interrogation, which is going on till now. So this kind of this is one trait of modernism in one sense. And I think this gets accentuated with your presentation, which actually in one sense is rooted in what you were talking about in terms of medieval times and Bhakti movement, which is also a kind of a harbinger of modernity in one sense. And so it all brings together the origin, in as far as you are concerned, you talk about, epics per se as they are, and then there is a movement. And I'm very curious to see as to what the fourth speaker is going to be doing. And if hopefully everything will come together or everything will get demolished, whatever we are talking about. So we have T.S. Krishnan. Go ahead, please. Good evening, everyone. And being a concluding speaker of the last session of a long day is not very easy. Let me try my best. I would like to thank Sahitya Academy for giving me an opportunity to speak on a topic which is very relevant today, and being part of an elite panel chaired by Subrataji. Thank you very much again. So the question is in terms of what is that I wanted to cover. I will probably sort of try to cover everything together to go back to the ancient times of why these epics were created in the first place and to where we are currently now in a bird's eye view. I think from my perspective, I would say that the epics are there everywhere in every country. So what is special about Ramayana and Mahabharata from an Indian context? I would say that they are very unique because we have to go back and then see why they are created in the first place. If you look at the word itself, we call that as itihasa because itihasa means it happened, and fundamentally they were trying to
give some idea about our ancient history. Yes, there are definitely poetic exaggerations, additions, modifications on a later time, but the core of it is basically try to cover what is our history to start with. And not only that, in the philosophical system of our country, we have got Vedas as the foundation. But it is so that the Vedas cannot be understood by everyone. They have created Upanishads. And Upanishads are also something which is sort of not propagated. It's all sort of reserved by foreign scholars. So they have created Puranas, and even Puranas were not understood. And then that's why they said that they have created these Itihasas. It's basically to carry the foundation of our philosophy from the Vedas to the masses. These Itihasas were created. So that's the second aspect. And the other important thing is that both Ramayana and Mahabharata carries a lot of life lessons. And then they carry in such a way that the Ramayana try to positively reinforces a lot of things, while the Mahabharata basically covers the don'ts or the things which we are not supposed to do while we sort of going through a life journey. The kind of do's and don'ts which we see in a normal country-to-day life. So if you look at Ramayana, for example, it actually tells us how to be a good king, an ideal prince, an ideal leader, an ideal wife, an ideal brother. Even the antagonists of the epic Ramayana, if you take even Kumbhakarna or Indrajit, they also talk sense. They also talk a lot of good things. They advise Ravana against abduction of Sita. So you'll see a lot of positivity in that. But if you look at the core of Mahabharata, it actually teaches us how not to be a good king, how not to be a pious person, how not to be a bad, how not to be a brother like Duryodhana. Even the good characters, like what Milinji said, like have a shade of grey. Yudhishthira, even though he is sort of somebody who carries dharma all the way, he has a lot of negative qualities in terms he went and then played dice, he actually lies during the Vada Ashwatthama. So there are a lot of grayness here. So it actually tells us that these are all the things you cannot do when you carry out the life. So the do's and don'ts of the life is basically covered in Mahabharata. Now the third aspect, or while these are all basically the philosophy and the life lessons which is actually coming through the epics, kind of a teaching or a preaching, how does it actually reach the length and breadth of the country? It's not created in languages, it's very common, right? It's all Sanskrit based. So in a diverse country like us, which has many languages, how does it penetrate through the entire masses? Today we are talking about people who are living in cities, people who are living in a very remote rural village, people who are scholars, illiterates, and then people who are not literate at all. But all of them know Ramayana in one way or other, and then they sort of talk about that. How does it happen? We need to look at the way the epics firstly covers the geography of the country, right? If you take Ramayana, Rama sort of born in Ayodhya, goes to Mithila, marries Sita, comes back, and then he travels through the country. When he was in exile, he goes to Chitrakoot, Panchvati, Kishkinda, all the way to south in Tamil Nadu, goes to Rameswaram, crosses the ocean to Sri Lanka. So there is every place in India has an identification with it. Similarly, if you take Mahabharata, everybody in Bharatvarsha participates in the war. People from Gandhara all the way down south, they are having one way or other. They are all very clearly mentioned in the epic. So the identification comes naturally to them. Say, hey, I have actually participated in the war. This is what I have done. There is a Chera king who actually says that or claims that he provided peace to both the armies at the end of the war. And then that's what the classic Tamil literature talks about. So there is some sort of an identification with the epic by every nook and corner of the country. And again, we talked about literature, right? So again, we have mentioned, Milinda's mentioned about Kamba Ramayana, Kirtibasa Ramayana. Ramayana and Mahabharata are translated in almost all the languages here. So everybody knows that. And there are multiple versions of it. There are abridged versions, there are modifications to the original story, but everybody took it as it is. There is absolutely, we all say that it is a sacred literature, but
there is absolutely no question in terms of when some modification is done, there are changes which are done to suit a particular region or a language. It's all accepted without any issues. I would like to take a liberty to quote one particular incident from again classical Tamil literature, Sangam literature, which is 2000 years old, as the researchers say, but before all these translations come. So it actually mentions a very interesting incident when Rama, along with the Vanarasena, goes all the way to the Ganeshkodi. Before crossing the ocean, he actually sits with the Sena and then works out a plan on how to go about it. And there is a banyan tree which is besides him, and there are a lot of birds in that banyan tree. And they make a lot of noises, and that is disturbing these people's peaceful discussion. So Rama just looks at them and then says quiet, and then there's a pin drop silence which engulfs the entire place. The poet, Sangam poet, Madurai Tamil Puthanar, in fact, compares that with a kind of a gossip which goes around the village about a boy and girl, and finally they want to get married, and then the gossip starts. So he says the silence here is in fact equal to the silence of what Rama said to the birds in the banyan tree. So that is the way the comparison comes in a place which is totally long away from the place where the entire epic happens. I'm sure this is going to be the case, or this is the case with every other region or every other language as well. And we can quote a number of such places. Even in the modern era. Again, I would like to again go back to Mahakavi Subramanya Bharati, who took one portion of the Mahabharata and then created something known as a Panjali Sapatam, a poetry. So here, what he actually tries to convey is that basically covers the dice playing, and then Draupadi being dragged into the court and then sort of disturbed. He actually put this entire scene into the poetry, but subtly he wanted to cover, because he being a freedom fighter, that at that time India, the Bharat Mata was in fact going through the ordeal of a Panjali, and the Pandavas, they are very powerful. They have got Krishna on their side, but they couldn't do anything at that time. They just are mute spectators. So the India, being a very big country with a lot of valor and other stuff, they are just keeping quiet against the British onslaught. So he's in fact is very angry. That anger comes out very clearly in terms of the words of Panjali, if you read the Panjali. So even the modern literature has its own way of modifying it and representing the epic. So the deviations, modifications from the original are accepted without any issues. That's one of the reasons why these epics are sort of preached into the masses. The other thing is, Sir has talked about Bhakti literature, right? Again, the philosophical jnana plane, it actually transcends into the Bhakti literature with a number of poets, the Akari tradition. Here in Tamil, we talked about the Alvars and Nayanmars, who are basically the Vaishnavites and Saivite saints, who sang about these epics. They sang about Rama and Krishna, the number of verses. And then it actually, while they talk about many episodes from these epics, they all talk about the Bhakti part. They don't talk about the life lessons or philosophical part, but mere Bhakti to the gods. So that is another important thing to note down, that the Bhakti literature or the Bhakti tradition has carried it into the masses in a way that a philosophical literature couldn't have done. And there are discourses which are happening everywhere, even today. In any temple, if you have a Ramayana discourse or a Mahabharata discourse, people throng, right? These are not stories which everybody doesn't know. Everybody knows that, but still they wanted to look at multiple flavors of it every time they go to these discourses. There are a lot of folk dances, and then there are even the street plays which enacts these topics in different ways, but they all have been enjoyed even today. If you look at the way it is happening, they are also intertwined into our belief system. There is also today a tradition that if a family is going through a very troubled time, they have to recite Sundarakanda, and they are given, like, you have to recite for 10 days, 15 days, etc. for these remedies. So people believe that
It's a belief system. Similarly, if there is a place which doesn't have rain, see, they said that go and then recite Virat Parva of Mahabharata, and it will bring rain, right? Whether it happens or not, that's a different question. But at least there is a belief system that even reciting of epics for a particular purpose actually brings benefits, right? Now, let us look at from another plane, right? Everybody want to identify with the epics in one way or other, right? The royal kings, like Cholas, they said that they are descendant of Rama. In their copper plates, they sort of put that they come all the way into the Raghuvamsa, right, from Rama days. So the royal people wanted to be identified with epics. Even the tribals, right? The Kols, they said that they are descendant of Sabari, and then they said that they are Sabari is their mother. There is another tribe called as Yerukula, which claims that Eklavya is basically their forefather. Interestingly, I heard that there is a tribe in Arunachal Pradesh who claim that Rukmini is from their tribe, and we know that Mahabharata, Krishna goes and then takes Rukmini back, and then Rukmini comes and then fights with him, and Krishna is about to kill him, but Rukmini says that he is my brother, please leave me. So what Krishna does is that he actually cuts his hair and then puts some shika in some places, which is a kind of a demeaning of an individual in those days. Even now, I think those tribes have their hair in a similar way because they are identifying themselves with the tribe of Rukmi and Rukmi, right? So that's what they say. So this is how everybody is sort of tuned into this epic throughout. Now, Sukhdaji talked about temples, right? There are temples everywhere of Rama and Krishna who are basically the core characters of these epics. But there are people who are not from a core of these epics, who are still worshipped by people across. We have got the temple of Hidimba, Gorodkaja in Manali. Right? There is a temple for Eklavya somewhere. Anjaneya is being worshipped everywhere in the country. But even the negative characters are worshipped. Ravana is actually worshipped in one particular place as their god, right? So even the negative characters of the epic are worshipped by certain communities in India. So the religious is not only the positive aspects of it, but it is actually the worship culture which is penetrated through multiple characters. So I would like to conclude by asking a question. Are these epics relevant even today? What is the modern generation of the young Hindustan thinks about the epic? Is it the same or is it different? I would like to go back to an organization which conducted a survey during the recent pandemic. We know that both Ramayana and Mahabharata, which are the teleserials of 90s, were re-telecasted during the pandemic, and everybody is sort of shut home. So they've tried to find out, because those days we don't have this kind of a state-of-the-art computer graphics or some 3D animation kind of a stuff. If you look at those serials, they are very primitive, even from a technology era perspective. So is it still appealing? Are they still appealing? What exactly are the lessons learned by these epics when they were viewed by people during this pandemic? And it is interesting to know that one question says, do you think the ethics and values shown in the Mahabharata are even relevant today? That's what they have asked. Viewership and all is taken. But this is what they asked. Do you think that the ethics and values shown are relevant today? And 77% of the viewers said yes, it is relevant today. And there is another question in terms of did you get influenced with the high ideals of Ramayana and Mahabharata after viewing the serial? Again, about 78 to 79% says that yes, I did get influenced by them. So it actually shows that the epics are relevant even today because of the very fact that they are not rigid. They sort of get adopted or customized over a period of time, and they got changed along with the changing period of time. It's not cast in stone as what we see from Valmiki or Vyasa days. It's actually changed its way without changing the core value. I think that is the basic thing which we need to take as one of the important aspects of how is this epics are actually relevant even today. So I would like to complete with the quote of C. Rajagopalacharya. He says that the real need of the hour is to recommune
between us and the sages of our land, so that the future may be built on rock and not on sand. I appeal particularly to the young man in schools and colleges, he says, to read these books. After reading, you will emerge with greater courage, stronger, and with purer mind. They are records of the mind and spirit of our forefathers who cared for the good, ever so much more than for the present, and who saw more of the mystery of life than we can do in our interminable pursuit for petty and illusory achievements in the material field. Let us keep our minds in the fact that the Ramayana and Mahabharata that bind our vast numbers together as a one people, despite caste, community, space, and language, that basically divides us. That's what Rajagopalachari says in his note to famous Vyasa Gurundu, his translation of Mahabharata. So with the words, I thank Sahitya Academy once more, and thanks for giving me this opportunity. I think this really works out very well as the conclusive summing up paper, because you have brought in everything that the rest were trying to talk about, and also we jumped over centuries, and you brought it all together in a very comprehensive style. I really feel that we need to, the more we dig into it, we realize that it's not the divinity part of it that interests most people, it's the human part. And I think that is the one reason why it's so relevant, because otherwise it would have become a sacred book to be worshipped, whether it's Mahabharata or Ramayana. It would have been kept in the temple. Well, Mahabharata still is kept in the temples, only because they say that if it's outside in a home, then the family would be fighting with each other. So it's not allowed to be kept home by the older people in the house. So it's always. However, what I'm saying is, the point I want to make is that the human qualities that you have here, whether it is ambition or it is jealousy or love or compassion or the ideal that we need to aspire to, everything is found in there. And I think the way we have the freedom to critically examine these texts, that is the best part. Because it's not as if it's not a revealed book that needs to be worshipped. We can dig into any aspect and recreate it. That freedom is there. And this freedom is what is allowing us to reimagine again and again, not only Ramayana as a whole or Mahabharata as a whole, but dip into whatever aspect we want to and do whatever we like. We want to dance on it, we'll dance on it. We want to write a poem, recreate that scene, we would do it. We want to become a literary critic like Sachin would, and would start talking about modernity and disasters, and which is very valid. We need to get into it, We need to critique it. We need to creatively reimagine paintings. Supposing you were to just see the visuals, endless number of visuals that are created, movies that are created, retellings that you find. So it's all encompassing, and yet it's not as if one can say point proven, it's done. No, it's not done yet. It's a work in progress all the time, just like a human being is. If there is a utopia created there, there is also a dystopia, immediately as a reference point. And there are contradictions. Like in life, there are contradictions. There is a dream world, and there is so-called a real world, and there is a surreal world. So it's an amazing, amazing documentation of possibilities of life. That is how I would like to put it. It's possibilities of life which we are digging into all the time. And we can go on for number of days talking about Mahabharata, talking about Ramayana, or for that matter, many other epics as well. But I think what we have done in this part of the world, which is remarkable, is that we have living mythology all the time. It's not a frozen, dead mythology like in the West. We have to look into encyclopedias to find out what is Aphrodite all about, what is, various terms names that we come across. We need to dig at that. But in terms of our epics here in this part of the world,
We still have about 5-10 minutes in case there is a question. Anybody who wants to ask question, please raise your hand. No one? We have 10 minutes. No. Oh, okay, thank you. Thank you very much. So, for the past 2 days, we have Ramayana, Mahabharata, national epics, and tomorrow there is a, we are going into folk and tribal epics. So I hope to see all of you around. As usual, the first session starts at 10 a.m. Thank you. Good for us. Yes.